कि उनके मंसूबे जो है वो पूर्ण नहीं होंगे, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा। जी बिल्कुल विपिन जी, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब में भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले थे। पुलिस स्टेशन के बाहर खालिस्तान के फ्लैग लगाए जा रहे हैं और अब पर बहुत बड़ा एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा के ऊपर ही खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। कि रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए उन्होंने रात को वहां पर ये कृत्य किया है। या तो वो बहुत शूरवीर हैं, बहुत अपने आप को दबंग मानते हैं, तो वो ये सारा दिन के उजाले में करते। मैं इनको कायरों की संज्ञा देना चाहता हूं और इन लोगों को ISI और पुन्नू जैसे नेता और हिंदुस्तान की भी कुछ एक राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। कभी पॉलिटिकल पार्टीज देन, ये पॉलिटिकल पार्टीज कौन है जो इन लोगों को सहारा दे रहे हैं, इन लोगों को उकसाया जा रहा है? जी, अभी पटियाला में जो पिछले दिनों घटना घटी है, अब पटियाला पंजाब में किसकी सरकार है? वो आपकी सरकार है। अब पंजाब के कुछ लोगों के खिलाफ पंजाब की पुलिस उठा करके उनसे पूछताछ, उनको इंटेरोगेट कर रही है। यानी ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे मंशा, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनकी सरकार पंजाब में है, दिल्ली में है, ये कृत्य और ISI के जो एजेंट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो डरपोक हैं और चंद चुनिंदा पैसा देने के बाद कुछ लोगों को वो आगे कर देते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमारा पूरा सिख समुदाय जो है वो अपने वर्षों से किए हुए जो भी काम, जो सिख समुदाय है वो हिंदुस्तान के हर मोर्चे पर जब देश को जरूरत पड़ी तो हमेशा आगे खड़े रहे। ऐसे समाज को भी ऐसे कुछ एजेंट जो है वो कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल विपिन जी, आप काफी बड़ा इल्जाम भी लगा रहे हैं कि कई सारे जो पैसे देकर इन लोगों को आगे करने की बात है, एक जो कंस्पिरेसी, जो साजिश की बात की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। क्या आप कह रहे हैं कि इसमें सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का भी हाथ है? मैंने पटियाला का उदाहरण दिया है और जो इस प्रकार से आजकल अराजकता का माहौल पंजाब में बना है, वो हुकूमत वहां पर किसकी है? वो आपकी है। विपिन जी, मैं चाहूंगी ये सवाल एक्चुअली विपिन जी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ये सवाल चाहूंगी, आई टेक टू सौरभ भारद्वाज as well of the Aam Aadmi Party who's joining us on the broadcast. Saurabh Bharadwaj, if you can hear me, you know, we are seeing these kind of incidents that are coming in, mushrooming in fact in Himachal Pradesh, also in Punjab, and a lot of political parties, including Himachal Pradesh's speaker, in fact, has stated that there is a link of Aam Aadmi Party as well in pro-Khalistan groups. Hello? Yeah, Saurabh Bharadwaj, if you can hear me. आवाज आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ सौरभ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी सारी उंगलियां उठाई जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि एक राज्य की विधानसभा, जो भाजपा शासित राज्य है हिमाचल प्रदेश, वो सबसे सिक्योर और सेफ प्लेस होती है। वहां पे तो किसी का जाना अलाउड नहीं होता। वहां पे ये कैसे हो गया कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने झंडे लगवा दिए? ये कितने शर्म की बात है उस राज्य सरकार के लिए। पर सौरभ जी, विपिन सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, विपिन सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का इससे ताल्लुक है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं चला सकते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी कमजोर सरकार जो अपनी विधानसभा की, अपनी आबरू को नहीं बचा सकती, ऐसी सरकार का क्या काम है?
और इस देश की 3 राज्य की सरकार एक गुंडे को बचाने के लिए लगे हुए हैं कि वो गुंडा अरेस्ट ना हो जाए, तो ऐसा होगा ही। इनका पूरा का पूरा ध्येय क्या है कि इस तरीके के जो बग्गा जैसे गुंडे एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी तरीके से जेल ना चले जाए। तो ऐसा होगा, सिक्योरिटी चुप तो इसलिए हुई क्योंकि इनका ध्यान जो है सारा का सारा गुंडे, अपराधी और लफंगे एलिमेंट्स को बचाने के अंदर लगा हुआ है। इनको देश को बचाना चाहिए, राज्यों को बचाना चाहिए। और पिछली बार पटियाला के अंदर भी जो दंगे हुए उसके अंदर जो परवाना थे, जो वहाँ के मास्टरमाइंड थे, उनके लिंक भी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मिले। भाजपा के नेताओं ने उनके पक्ष में ट्वीट किए हुए हैं, उनके पक्ष में हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, वो उनके पक्ष में, उनकी मित्रता में काफी बार आते रहे हैं और वो मास्टरमाइंड थे पटियाला के। तो इसका मतलब ये है भाजपा हर जगह खालिस्तानी एलिमेंट्स को शय देके देश का माहौल खराब करना चाहती है, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। हर राज्य के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा, रामनवमी से सिलसिला शुरू हुआ, हनुमान जयंती तक चला, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो दिल्ली। सौरभ भारद्वाज बने रहिए हमारे साथ। सांप्रदायिक दंगे सौरभ बने रहिए हमारे साथ। विपिन सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाए हैं आपके ऊपर। विपिन सिंह जी, आपका क्या जवाब है सौरभ भारद्वाज के इल्जाम के ऊपर? उन्होंने कहा है कि ये भाजपा का स्टेट है, बीजेपी की वजह से भी कई सारे जो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी विधानसभा को, वो भाजपा नहीं दे पाई। मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो शांति, अमन और सौहार्दपूर्ण ऐसा करके नजरिया रखने वाला प्रदेश है। यहाँ पर इस प्रकार की गाहे बगाहे कभी कोई घटना हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ अशांति फैल गई, उसको हम इल्जाम के रूप में कोई बात नहीं कह सकते। कायरो ने रात के अंधेरे में जो कभी दिन के उजाले में ये काम नहीं कर सकते, ये कृत्य किया है। और मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब में हुकूमत बनने के बाद हम पंजाब के पड़ोसी राज्य हैं, इस प्रकार की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं गाए बगाहे कहीं देखने को मिलती हैं। पर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें निरंतर कड़ी नजर और जो कानून के दायरे में काम करना होता है वो कर रही है। इसलिए इस शांत प्रिय प्रदेश को अशांति में बदलने की के जो प्रयास हैं वो पूर्ण नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में अच्छा सुशासन, बढ़िया सुशासन शायद कुछ लोगों को ये हाजम नहीं हो रहा है। और देश में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विचार की सरकार काम कर रही है वो अच्छे सुशासन, बढ़िया शासन और देश के लिए काम कर रही है। कुछ लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है और ये कृत्य करने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं। Right. I want to thank both my panelists, Vipin Singh Parmar and Saurabh Bharadwaj, for joining us on the broadcast with their perspectives on what's really unraveling there in Dharamshala, where outside the Vidhan Sabha itself, viewers, there have been pro-Khalistan flags that have been hoisted. Let's listen into several reactions that are pouring in on this big story today. दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है, ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है लेकिन वो अंदर रहती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं
और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ज़्यादा सख्त हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलरली जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू कर हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार से भी जो हमारा भाईचारा है, प्रेम है, देशभक्ति है, नेशनलिज्म है, सोशल जो ताना बाना है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। जी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मौके का फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा है सर, वहां पर सर खालिस्तानी झंडे लहराए गए। क्या लगता है कि इस तरीके का धार्मिक उन्माद भारत में लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुछ साजिशी सुपारी के सूरमा हमारे देश की एकता, हमारे देश के सौहार्द को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें हमारे देश के लोग ही कभी सफल नहीं होने देते और इस बार भी सफल नहीं होगा। Out our lives through technology, but can also provide employment opportunities to many people. I am sure that the ecosystem at IIM Nagpur will provide among the students the mindset of becoming job creators instead of being job seekers. What requires is a spark from bright minds like you to bring these together. It is indeed a mark of appreciation that IIM Nagpur has established 7 centers of excellence. I am happy to know that IIM Nagpur, through its Center for Entrepreneurship, has established IIM Nagpur Foundation for Entrepreneurship Development, that is INFED. What is a matter of immense pride is that INFED has successfully enabled women entrepreneurs to graduate from Women Startup Program, and 6 of them have even launched their enterprises. Such programs provide an effective platform for women empowerment. I strongly believe that our daughters, whenever provided an adequate platform, always shine to the optimum. It is a true tribute to the land of Savitribai Phule and Dr. Anandibai Joshi, who were the first few stalwarts in the field of education and medicine. Dear students, I am happy to know that IIM Nagpur has begun taking steps in the direction of encouraging innovation. It has also assumed the responsibility of being a regional innovation organizer, which works as a business incubator, providing support services for innovation and entrepreneurship. It is through these ventures can we dream of being an Atmanirbhar Bharat. Ladies, it was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Isn't it political motivations of the Chief Minister, whether it's here, whether it's in Maharashtra, or whether it's the Mamata Banerjee government, isn't it time that these state governments realize they can't weaponize state machinery, something that you have on the court?
what happened in our case after all that, and then they realized that the police commissioner, who was the mastermind who gave the interviews against Arnab, he was running an extortion racket. The man's on the run. There are no real consequences. Unless we have to fix this system. If we don't fix this system, God be with it. सर, आपकी गिरफ्तारी हुई, 3 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व थी। पंजाब पुलिस आई, लेकिन बीच में हरियाणा पुलिस भी आ गई। 3 स्टेट की पुलिस। टोटल एक तरह से अवैध गिरफ्तारी थी, जिसको किडनैपिंग कहा जाएगा। मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया, मेरे पे और पिताजी के ऊपर हमला किया और 7-8 लोग उठा के जिप्सी में डाल दिया। कह रहे कि पंजाब पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी की और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके इशारे पे गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने कल जो अवैध किडनैपिंग की वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे की, तो निश्चित तरीके से वो एक संदेश देना चाहते थे, अब मेरे पास पुलिस है और जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। There are dramatic visuals of the leaders such as R.P. Singh and Majinder Singh Sirsa, who are the national spokesperson as well of the Bharatiya Janata Party. They are trying to barge in the street where a few meters away from the protest site locates the Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal's residence. In India, there are fake arrests and there are wrong illegal cases that are being put against innocent citizens. Navneet's case, which is an ordinary case of an arrest, we had to take it up to Supreme Court to get bail. That should never have been. If we have a civil rights law, I would make that law saying if there is a false arrest, the magistrate should have the power to arrest the commissioner of police. Do it in 2 cases, he will stop obeying these kind of diktats by his political masters. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. Show some equality, show some decency when you come for a debate. Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl, and Ankit Saxena would be murdered, butchered, and perhaps lynched by a mob because he fell in love with a Muslim woman. Violence is everything that's on your mind, and you're whitewashing a survival experience by not listening to their perspective. That is the problem. That is the problem with bigots in this country, that they want to gag real stories out there. They want to gag stories of the likes of. In a big relief to Tajinder Pal Singh Bagga from Punjab and Haryana High Court, who has stayed the Tajinder Pal Singh Bagga's arrest till 10th of May. And in fact, this hearing that had taken place in the midnight at the residence of Justice Anup Chitkara, who has clearly mentioned and directed Punjab government that there should be no corrective action against Tajinder Pal Singh Bagga till 10th of May. Though Tajinder Pal Singh Bagga has filed a petition against the arrest warrants that has been issued by the Mohali court, and that hearing happened midnight. A strong argument happened, but at the end of the hour, Tajinder Pal Singh Bagga has got the relief, and in fact no arrest should take place. This was directions that has been given by the Punjab and Haryana High Court to Punjab government till 10th of May. So big relief to Tajinder Pal Singh Bagga till 10th of May. No arrest should take place despite having arrest warrant from the Mohali court, just because it is a face-off between Punjab government and BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. The world over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god.
nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for suicide bombing after sloganeering Jai Shri Ram or Jai Siya Ram. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hinduphobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hinduphobia. When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the gun like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. Unless and Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them. When Nagaraju was killed for being a Hindu, all his party's top leaders are in Hyderabad. Which one of them, Ratan Shah, please ask him, which one of them had a protest march? That is Hinduphobia. Political motivations of the Chief Minister, whether it's here, whether it's in Maharashtra or whether it's the Mamata Banerjee government, isn't it time that these state governments realize they can't weaponize state machinery, something that you have called the court? What happened in our case, after all that, and then they realized that the police commissioner, who was the mastermind who gave the interviews against Arnab, he was running an extortion racket, the man's on the run. There are no real consequences. Unless we have to fix this system. If we don't fix this system, God be with it. सर, आपकी गिरफ्तारी हुई, 3 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व थी। पंजाब पुलिस आई लेकिन बीच में हरियाणा पुलिस भी आ गई, 3 स्टेट की पुलिस। टोटल एक तरह से अवैध गिरफ्तारी थी जिसको किडनैपिंग कहा जाएगा। मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया, मेरे पे और पिताजी के ऊपर हमला किया और 7-8 लोग उठा के जिप्सी में डाल दिया। कह रहे कि पंजाब पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी की और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके इशारे पे गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने कल जो अवैध किडनैपिंग की वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे की, तो निश्चित तरीके से वो एक संदेश देना चाहते थे, अब मेरे पास पुलिस है और जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। There are dramatic visuals of the leaders such as R.P. Singh and Majinder Singh Sirsa, who are the national spokesperson as well of the Bharatiya Janata Party. They are trying to barge in the street where a few meters away from the protest site locates the Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal's residence. In India, there are fake arrests and there are wrong illegal cases that are being put against innocent citizens. Navneet's case, which is an ordinary case of an arrest, we had to take it up to Supreme Court to get bail. That should never have been. If we have a civil rights law, I would make that law saying if there is a false arrest, the magistrate should have the power to arrest the commissioner of police. Do it in 2 cases, he will stop obeying these kind of diktats by his political masters. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. Show some equality, show some decency when you come for a debate. Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl, and Ankit Saxena would be murdered, butchered, and perhaps lynched by a mob because he fell in love. Here are the top stories, viewers. Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied on the gates of the Legislative Assembly. Chief Minister Jairam Thakur takes stock of the Khalistan provocation, urges strictest action against those involved. Amid protests and heavy police deployment, the Gyanvapi Mosque survey had to be halted till court hearing on May 9th. In a rare midnight hearing, the Punjab and Haryana High Court stayed arrest warrant issued by Mohali Court against Tejinder Bagga. Encounter operation underway in Kulgam district. 2 terrorists, including 1 Pakistani national, has been trapped.
19 policemen injured. Police vehicles have been damaged in a mob attack in a steel plant in Palakkad. Well, viewers, we're cutting across to some breaking updates we are getting of Navneet Rana, who is now being discharged from the hospital. She's getting out of the hospital as we speak, and those are the visuals on your screens right now. Remember, over the last few days, we have seen how the entire controversy involving Navneet Rana and her husband as well have gone viral. In fact, we have seen how they had started this entire controversy of the loudspeakers. रवि राणा निकल चुकी है लीलावती हॉस्पिटल से। तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से लीलावती हॉस्पिटल से रवि राणा और नवनीत राणा दोनों निकल चुके हैं। नवनीत राणा की तस्वीरें देखिए, नवनीत राणा हनुमान चालीसा का बुक लेकर हाथ में देखिए। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से जो समर्थक हैं उनका आरती उतार रहे हैं और हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का देखिए तस्वीरें देखिए। ये देखिए जो कार्यकर्ता हैं बाहर निकलने के बाद यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं। नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तस्वीरें जो देख रहे हैं, नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। 5 मई को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। भैकला जेल से बाहर निकलने के बाद सीधे लीलावती हॉस्पिटल आई थी। और यहाँ पर तस्वीरें जो देख रहे हैं, बजरंगबली हनुमान जी के यहाँ पे मूर्ति दे रहे हैं उनके समर्थक नवनीत राणा को। तस्वीरें जो देख रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से नवनीत राणा बाहर निकली है, डिस्चार्ज हो चुकी है लीलावती हॉस्पिटल से। 5 मई को नवनीत राणा भैकला जेल से निकली और सीधे लीलावती हॉस्पिटल आई थी। उनकी तबीयत खराब थी और यहाँ पे रहने के बाद आज डिस्चार्ज हो रही हैं। बगल में रवि राणा भी मौजूद है, नवनीत राणा मौजूद है, नवनीत राणा के समर्थक मौजूद हैं। लीलावती हॉस्पिटल से सीधे खार के घर पे जाएंगी और वहाँ पर रहेंगी। यहाँ से अमरावती नहीं जाने वाली है, मुंबई में ही रहने वाली है नवनीत राणा, अभी जो जानकारी मिल रही है। और तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से लीलावती हॉस्पिटल के बाहर नवनीत राणा बाहर निकल चुकी हैं, गेट पे पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए, रवि राणा भी मौजूद है, समर्थक भी मौजूद हैं और यहाँ शंखनाद हो रहा है, शंख बजाया जा रहा है। जो नवनीत राणा के समर्थक है वो शंख बजा रहे हैं। तस्वीरें जो देख रहे हैं, नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। 5 मई को भैकला जेल से सीधे नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। कल भी तस्वीरें आई थी, उनका चेकअप हो रहा था। कल देर शाम को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए थे नवनीत राणा को देखने के लिए और अब डिस्चार्ज हो रही। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से नवनीत राणा निकल रही है, लीलावती हॉस्पिटल से निकल रही है और मीडिया से बात कर सकती है। तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से निकल रही है और तस्वीरें देखिए, साथ में रवि राणा भी मौजूद हैं। और 5 मई को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी नवनीत राणा और लवली। तस्वीरें देखिए, हाथ में हनुमान चालीसा है नवनीत राणा के। और तस्वीरें देखिए, नवनीत जी क्या कहेंगे, हाथ में हनुमान चालीसा। नवनीत जी क्या कहेंगे, हाथ में हनुमान चालीसा और सॉल है जय श्री राम वाली। जी कहिए, नवनीत जी कहिए। अरे यार हाथ छोड़ो मेरा यार। बड़े मुश्किल दिन थे, क्या कहना चाहेंगे आप? और ये ठाकरे सरकार से मेरा प्रश्न है
सर थोड़ा हमारे भी देख लेना, आराम से ये बस अंदर आ रहे मैडम। और हाथ नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13 ये सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। अरे बोल रही है भाई, रुको ना। अरे भाई मुंडी नीचे करो ना यार। जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी हिंदी में और महाराष्ट्र के ऊपर जो एक महिला की तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूँगी, पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूँगी। नवनीत जी मराठी अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है तो शी शुड गेट चेक। 27 से लेकर 4 तारीख मराठीत बोला मॅडम, मराठीत बोला मॅडम। सीपी सर ने जो तुमच्या घरावरती अमरावतीमध्ये हल्ला झाला, आपके घर पे भी घरावरती हल्ला झाला। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया है। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज लेना। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ठाकरे जी को भी बोलना चाहूँगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुनने आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी दूंगी। कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपके मैडम मराठीत बोला मैडम। ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या। मैडम मराठीत बोला था रुको क्या हिंदी कंप्लीट करने के बाद बोलेंगे।
जेल में नीचे हो जाना रिपोर्टर मराठीतून बोला यार लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है। मराठीत बोला यार एक तर मराठी बोलू देना काय बोलता रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर किया, उस पर हमारा पूरा विश्वास था। और मैम मैडम दिल्ली कब जा रहे? मैडम दिल्ली कब जा रहे? मैडम दिल्ली कब जा रहे? अमित शाह जी से मुलाकात मैडम दिल्ली कब जा रहे? गृह मंत्री से मिलने। मराठीत बोला था मैडम सेंटरला बदल मी डॉक्टरांना रिक्वेस्ट चेकअप्स माझे आणि ती हेल्थ परिस्थिती जे या अरे यार आगे मेरा ही हाथ नहीं जेलमध्ये एक महिलासोबत एवढा मोठा अत्याचार, माझा प्रश्न आहे की मी अशी कोणती चूक केली रामाचं नाव घेणं आणि पूरा प्रेम में आ रहा है त्याच्यासाठी 14 दिवस मला जेलात टाकलं, तर मी त्यांना अरे बघ ना TV9 नाचतो सारखा यार। 14 वर्ष ही जर मला देखिए तस्वीरें जो देख रहे हैं, नवनीत राणा बात कर रही हैं और मीडिया से बात कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनको परेशान किया गया, जिस तरह से जेल में प्रताड़ना किया गया, साथ ही जिस तरह से उनके साथ और रवि राणा के साथ जिस तरह से परेशान किया गया, इस सारे मुद्दे को लेकर बात कर रही है, मीडिया से रूबरू हो रही है। लीलावती हॉस्पिटल से सीधे वो खार के घर पे जाएंगी। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से उनके समर्थक भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल पे, और समर्थक भी खार के निवास पे जाएंगे। नवनीत राणा और रवि राणा दोनों खार निवास पे जाएंगे यहाँ से लीलावती हॉस्पिटल से निकलने के बाद। फिलहाल जो परेशानियां हुई सारी बता रही हैं, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर मीडिया से रूबरू हो रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई किया है वो गलत किया है। एक महिला को इस तरह से परेशान किया गया है, अत्याचार हुआ है, इस मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें जो देख रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल से नवनीत राणा निकल रही हैं और सीधे खार के घर पे जा रही हैं। खार के घर पे जा रही हैं, रवि राणा भी साथ में है मौजूद, और यहाँ से निकलने के बाद खार घर जाएंगी। वहीं खार के घर पर भी बीएमसी ने नोटिस दिया है 2 दिन पहले ही, और अब देखना है कि रवि राणा और नवनीत राणा जब घर पहुँचते हैं तो बीएमसी की टीम आती है कि नहीं, क्योंकि बीएमसी की टीम ने नोटिस दिया है कि घर पे रवि राणा और नवनीत राणा रहेंगे तो बीएमसी की टीम आएगी, क्योंकि बीएमसी का आरोप है कि जो घर बनाया गया है अंदर वो इनलीगल है। इन सारे चीज़ों को लेकर बीएमसी की टीम आने वाली है और सर्वे करने वाली है घर के अंदर। नवनीत राणा अपने समर्थकों के साथ यहाँ से निकलेंगे, खार के घर पे जाएंगे और वहाँ पे और खास तौर पर जिस तरह से परेशान किया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर बात कर रही नवनीत राणा और रवि राणा। 5 मई को भैकला जेल से जब रिहा हुई थी, जेल से बाहर निकली थी, सीधे इसी लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 2 दिनों से लगातार उनका इलाज चल रहा था, उनका सारा चेकअप हुआ। इसके बाद कल देर शाम को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए थे, बीजेपी कई नेता पहुंचे हुए थे नवनीत राणा को देखने के लिए। देर शाम देवेंद्र फडणवीस निकलने के बाद वो भी मीडिया से बात किए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार जिस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर कार्रवाई किया है, पूरी तरह से गलत किया है, लगातार वो निषेध कर रहे हैं। अब तस्वीरें जो देख रहे हैं कि नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल से निकल रही हैं। यहाँ से हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे खार के घर पे जाएंगी, जहाँ पे रहेंगी। वहाँ पे तस्वीरें जो देख रहे हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा खार के घर से निकल रहे हैं और सीधे यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे साथ रवि राणा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवि जी,
तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा यहाँ से निकल रहे हैं, लीलावती हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तस्वीरें जो देख रहे हैं और यहाँ से सीधे खार के घर पे जाएंगे। 5 मई को भैकला जेल से निकले थे। जब उनको बेल मिली थी सीधे यहीं पर लीलावती हॉस्पिटल में आए थे और एडमिट कराया गया था। हमारे साथ यहाँ पे रवि राणा है। रवि राणा जी, तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से रवि राणा, नवनीत राणा लगातार मीडिया से बात कर रही है। उनका कहना है जिस तरह से बाहर नहीं मारने भाई सर, थोड़ा बाहर जाइए ना। अरे उचल 12 दिवस 13 दिवस ज्या पद्धतीची भावनांनी आमच्यावर कारवाई झाली, एक महिला इमोशनल क्षण तो माझे लाईफ पार्टनर सोबत जो माझा होता, मला वाटते कुठे ना कुठे जे श्रूड बुद्धीनी माझे महिलावर कारवाई केली ते पण सांगता माझे डोळे भरून आले होते, पण मी हारली नाही. मी याच्यानंतर अजून ताकदनी बाहेर निघालेली आणि एवढेच ताकदनी मी समोर येऊन लढणार सुद्धा आहे. त्याच्यामध्ये काही डाऊट कोणी घेऊ नये. आणि उद्धव ठाकरेला माझं स्पष्ट आव्हान आहे, कोणता मतदारसंघ आहे तिथे लढा, त्यांच्या विरोधात मी लढणार. आणि अयोध्यामध्ये ज्या पद्धतीने आता बॅनरबाजी होत आहे, असली और नकली, अरे बाळासाहेबांनी कधीही असली नकली दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते स्वतः असली होते. आता ही बारी, ही परिस्थिती शिवसेनावर आहे की असली कोण आणि नकली कोण दाखवण्याची बारी या परिस्थितीमध्ये उभी आहे. पण राम भक्त त्यांना हे उत्तर देणार आहे. असली जे होते ते चालले गेले आणि नकली सगळे खाली राहिले. मी लवकरात लवकर दिल्लीमध्ये जाणार आहे, कारण मुंबईमध्ये त्यांच्या पूर्ण डिपार्टमेंटमध्ये ज्या प्रेशरमध्ये सगळे काम करतात त्यानुसार मी मुंबईत जाऊन मी तिथे न्यायाची गुहार लावणार आहे. एक लोकप्रतिनिधी देखिए नवनीत राणा बाहर निकल चुकी है और गेट पे मीडिया से बात कर रही हैं। यहाँ से सीधे खार के घर के पर जाएंगे। वहाँ पे रवि राणा भी साथ में जा रहे हैं और इनके समर्थक भी साथ में जा रहे हैं। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल से बाहर नवनीत राणा निकल रही हैं। 5 मई को भैकला जेल से जब कोर्ट से बेल मिला था, भैकला जेल से सीधे इसी लीलावती हॉस्पिटल में आई थी और एडमिट हुई थी। लगातार चेकअप हुआ। फिलहाल उनकी सेहत जो हेल्थ है वो पूरी तरह ठीक है। इसके बाद लीलावती हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हो रही हैं और यहाँ से सीधे खार के घर पे जाएंगे जहाँ पर रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ से बीएमसी भी इंतजार कर रहे हैं। बीएमसी लगातार नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर नोटिस चिपका के गई है कि जब आएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि जो बीएमसी का आरोप है, बीएमसी कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि जो घर बनाया गया है, अंदर बनाया गया है, वो इलीगल बनाया गया है। बीएमसी इंतजार कर रही है कि नवनीत राणा और रवि राणा कब आते हैं, इसके बाद बीएमसी की टीम आएगी। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से रवि राणा, नवनीत राणा और रवि राणा निकल रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं। नहीं, हमारे साथ रवि राणा है। एक मिनट सर, रवि राणा हम नहीं क्या। हाँ सर हमारे साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई और आज निकल रही है, क्या करेंगे? अयोध्या की याद आ रही है। 10 तारीख को जो अयोध्या के पोस्टर लगे हैं उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम असली है कि नकली है। बाला साहब असली थे, जो 10 तारीख को जा रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व को गांड रखा है, हिंदुत्व को भूल गए हैं। वो नकली लोग अयोध्या जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम असली है। तो जब पोस्टर लगाने की बारी इन पे आ रही है तो समझ जाओ आने वाले परेड में हिंदू उनको जगह दिखाने वाले हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई वो क्या कहेंगे? आज 5 तारीख को भैकला जेल से आई थी और ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से कार्रवाई हुई इस पर क्या कहेंगे? कौन सी कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जो कार्रवाई दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक महिला को शिवसेना डर चुकी है, राज्य सरकार डर चुकी है, उद्धव ठाकरे डर चुके हैं। और एक महिला पे इतना अत्याचार महाराष्ट्र में अगर होता है मुख्यमंत्री के माध्यम से, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। और आने वाले समय में हनुमान भक्त और राम भक्त उनको जगह बताएंगे। और उन्होंने खुली चेतावनी दी है
खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या दिल्ली में जा रहे हैं आप? दिल्ली जाने वाला हूँ और दिल्ली को न्याय मांगने वाला हूँ। वहाँ गृह मंत्रालय है, पीएम साहब है, जो डिपार्टमेंट में शिवसेना के माध्यम से जो इंक्वायरी शुरू है वो जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए और अनिल परब आणि संजय राऊत या दोघंही जेलाच्या आतमध्ये गेले। बीएमसी ने जो आपको नोटिस दिया है कहीं ना बीएमसी नोटिस ये एक दुश्मनी निकाल रहे उद्धव जी, और उद्धव ठाकरे सीएम होते हुए अगर पद का दुरुपयोग करते हैं, मुझे लगता है जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई उसको मान्यता मुंबई महानगर पालिका ने दी है, उद्धव ठाकरे जी के महापौर ने दी है। अगर कुछ गलत है तो उन्होंने आके चेक करना चाहिए, पूरी बिल्डिंग उनके नज़र के सामने है। और मुझे लगता है ये द्वेष और खुन्नस की राजनीति है, ये महाराष्ट्र और देश की जनता जान रही है। नवनीत काफी परेशान है, काफी परेशान है। नेक्स्ट मूव क्या होगा अगर आप? हम लड़ेंगे, हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय ने पहले ही कहा है राजद्रोह का गुना गलत है, गलत तरीके से इन पे ऑफेंस दाखिल किया है, 14 दिन जेल में रखा गया है और न्यायालय पे हम लड़ेंगे। न्यायालय के माध्यम से जिन्होंने गलत हमारे ऑफेंस दाखिल किया उन पे कार्रवाई करेंगे। जब न्यायालय ने बताया गलत तरीका है, गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल हुआ है और ये बनता ही नहीं है, तो मुझे लगता है न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हम वापस न्यायालय में न्याय मांगेंगे, जिन्होंने गलत किया उन पे कार्रवाई करेंगे। नवनीत जी काफी परेशान है, नवनीत जी काफी परेशान है। जो हाई कोर्ट में गया था वो स्क्वॉश हो गया है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? मैं बोल रहा न्यायालय में न्याय मांगेंगे। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी राज्य को चलाया, राज्य को आगे बढ़ाया और उद्धव ठाकरे ने गड्ढे में डालने का राज्य को काम किया है। सिर्फ देश वाली राजनीति और घर में बैठ के उद्धव ठाकरे जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है जनता के बीच जाके उसने काम करना चाहिए। नवनीत जी काफी परेशान है, देख रहा हूँ। और न्याय मांगेंगे, जो हमारे पे अत्याचार हुआ, जो हमारे पे अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और वहाँ पे दिल्ली में न्याय मांगेंगे, महाराष्ट्र में। It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. I am not saying Muslims are carrying out violence. I am saying some Muslims are. But what I am saying to you is, at least this much honesty to say Hindus are being attacked. We are being selective on cases. We are selectively talking about one person. We are not talking about the 8 girls getting raped in Uttar Pradesh in just one day. They are Hindu. We are not talking about that. It's easy to be cynical and commenting on political affairs by making these ridiculous comments. But what is going to get them is fine. They'll get some talis out there from their own community. But I'm sorry, if these kind of populist agendas are going to overturn a national good, then they've got to rethink about what their politics is all about. यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो पहुंचा था अजान पढ़ने के लिए। पुलिस की तरफ ने समझाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, लेकिन जैसे ही कुछ लोग यहाँ से वापस जाने लगे, वहाँ पर नारेबाजी जो है शुरू हो गई। लगातार माइक से जो है इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग जो है यहाँ से हट जाएं, किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। World over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god, nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for suicide bombing after sloganeering Jai Sri Ram or Jai Siya Ram. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hindu phobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hindu phobia. When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the guru like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. Unless and until Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them.
When Nagaraju was killed for being a Hindu, all his party's top leaders are in Hyderabad. Which one of them, Ratan Shahda, please ask him, which one of them had a protest march? That is Hindu phobia. Isn't it political motivations of the Chief Minister, whether it's here, whether it's in Maharashtra, or whether it's the Mamata Banerjee government? Isn't it time that these state governments realize they can't weaponize state machinery, something that you had told the court? What happened in our case, after all that, and then they realized that the police commissioner, who was the mastermind who gave the interviews against Arnab, he was running an extortion racket, the man's on the run. There are no real consequences. Unless we have to fix this system. If we don't fix this system, God be with it. Viewers, we're getting you some breaking updates now from where SFJ in fact has released a video on Khalistani flags that have been hoisted at the Himachal Assembly itself. Remember, we had been tracking that story for you since morning, where Khalistani flags have been hoisted near the Vidhan Sabha, and now another video that has been released by the SFJ on the Khalistani flags that were hoisted at the Himachal Assembly. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. यही वो मस्जिद है जिसके अंदर जो है सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम जब पहुंच चुकी है तो ऐसे में सर्वे जो है शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए ये जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, दरअसल इसी गुंबद के नीचे कहा जाता है कि देखिए वो वापी जो है मौजूद है, वो कुआं जो है मौजूद है जिसमें एक ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, इस गुंबद के पीछे देखिए गौरी श्रृंगार का वो मंदिर है जहाँ पर महिलाएं जो है चाहती है, वो याचिका दायर की गई है जिसमें वो महिलाएं चाहती है कि देखिए हम जो है रोज पूजा अर्चना कर सके, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म जो है खुद चुन सकते हैं। Mr. Salve, how legal do you think the police action is when they walk into other states and make such arrests? There are provisions in the CRPC which, speaking for myself, I think are wholly inadequate in today's scenario. There are provisions in the CRPC by which they have to take permission, they have to go to the local court and then take permission to arrest. In fact, the whole arrest thing, unfortunately, and I'm sorry to say, the Supreme Court has let these people off the hook. Arrest has to be an exception. Today in India, arrest is the rule. I am not saying Muslims are carrying out violence. I am saying some Muslims are. But what I am saying to you is, at least this much honesty to say Hindus are being attacked. We are being selective on cases. We are selectively talking about one person. We are not talking about the 8 girls getting raped in Uttar Pradesh in just one day. They are Hindu. We are not talking about that. It's easy to be cynical and commenting on political affairs by making these ridiculous comments. But what is going to get them is fine. They'll get some talis out there from their own community. But I'm sorry, if these kind of populist agendas are going to overturn a national good, then they've got to rethink about what their politics is all about. यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो पहुंचा था अजान पढ़ने के लिए। पुलिस की तरफ ने समझाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, लेकिन जैसे ही कुछ लोग यहाँ से वापस जाने लगे वहाँ पर नारेबाजी जो है शुरू हो गई। लगातार माइक से जो है इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग जो है यहाँ से हट जाएं, किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े।
world over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god, nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for, suicide bombing after sloganeering Jai Sri Ram or Jai Siya Ram. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hinduphobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hinduphobia. When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the guru like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. Unless and Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them. When Nagar Good evening and welcome, ladies and gentlemen. It has been a packed news week, but there is an underlying issue that no one wants to address. The opposition fears losing their vote banks if they talk about it. The motivated lobbies won't talk about it because their foreign funding will stop. And then there is another section that actively creates the problem. And the problem in question is Hinduphobia. Yes, viewers. Hinduphobia, the vitriol and the hate and the violence against the Hindu religion. Hinduphobia was on display when Nagaraju was killed on Thursday in the middle of a street by the brother of the Muslim girl he married. His fault, he was a Hindu. Hinduphobia was on display when Hindu temples were destroyed with impunity in Alwar. Hinduphobia was on display when the US CIRF released reports to defame India's multi-dimensional culture by villainizing Hinduism. And tonight it's time to take the issue head on. It is time to have a factual and real debate on the issue. True secularism does not lie in blindsiding the reality. It lies in addressing the problem, no matter how inconvenient it may be for the narrative or ideology of a few. On this debate today, the question is straightforward. Hinduphobia is real. But who is creating Hinduphobia in India? Is there not a lobby that is villainizing Hindus and generating hate against the Hindu community? Ankit Sharma, Harsha Hindu, Nagaraju, why don't Hindu lives matter? If there is no Hinduphobia, why are exoduses by Hindus still a reality, whether it be from Khargon or anywhere else? And where will those who in alarmist manner say minorities are under attack, why don't they talk about how the majority is being increasingly attacked? And is there not a pattern in this? No matter the issue, to blame one majority community. Hasn't there been an overt attack and insult of anyone who takes any modicum of pride in Hindu culture or in the Hindu way of life or Hindutva? Ladies and gentlemen, on the debate this evening, that is my main debate. Can anyone be in denial about Hinduphobia in India? Who is creating Hinduphobia in India? Who is generating Hinduphobia in India? That's the debate on this edition of Ornob Live. And ladies and gentlemen, I would say there is no point being coy about it. There is no point being meek about it. The only solution to Hinduphobia is to acknowledge the problem, to confront the growing problem of Hinduphobia head on. Over the past week, in fact, over the past month, the shocking reality of Hinduphobia came to the fore again and again and again. And tonight it is time to ask, who is creating Hinduphobia? Here is the story, and then we get straight to the debate.
There may be brazen denial about Hindu phobia, but the reality cannot be ignored. B. Nagaraju was killed last week after he married a Muslim woman. लास्ट में जब मेरे हस्बैंड को ना ओनली सर पे ही मारते, इतनी मतलब राड लेके सर पे ही मारते गए. मेरे हस्बैंड को मारने आए तो मैं ऐसा धक्का देते वक्त मेरे भाई का फेस एक दिखा मुझे, और मेरे जीजू का तो जो फ़ोटो बताए ना, जब तो जीजू तो नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने थे या नहीं वो नहीं मालूम. और मेरे हस्बैंड को ना मतलब मैं सबको हेल्प पूछी मैम, पूरा रोड पे सब लोग, अगर सब चाहे तो मेरे हस्बैंड कोई भी नहीं करे मैम, कोई भी नहीं करे, सबके मतलब सबको बैग्स पे सब जाते ना, सबको हेल्प भी पूछी मैं. और मेरे हस्बैंड को नहीं मारे जैसा मेरे भाई को ढक ले तो, और एक जो है ना उन्होंने मारते गए. मैं जैसा जैसा मेरे हस्बैंड के नज़दीक गई तो एक जने मतलब धक्का दे के मेरे हस्बैंड को मारते गए. मेरे भाई से मैं मतलब उनके सामने मैं जाना चाहती, मैं मतलब पुलिस जो है ना अभी तक उनको मेरे सामने नहीं लाए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ. और जो मेरे हस्बैंड को मतलब इतने बुरे तरीके से उनको जो मारे ना, उनको कितनी तकलीफ़ हुई, उनको भी एहसास होना कि दर्द क्या है. मैं कभी भी किसी का बुरा कभी नहीं सोची मैम, लेकिन मैं अगर मुझे तो नींद भी नहीं है मैम, ऐसा आंख मुझे तो भी मुझे मतलब माइंड में सब वही आ रहा. मैं बहुत बुरे तरीके से मारे, और मैं यही चाहती कि उनको मेरे सामने लाए, मैं उनसे बात करना चाहती. And before Nagaraju, there was Harsha in Karnataka. And even before that was Ankit Sharma, who was stabbed 50 times during the Delhi riots. Fact is, there has been an almost blindsiding of the attack on Hinduism by those who want to peddle Hindu phobia but deny its existence. And display of Hindu culture is attacked. Remember how the Shastra Puja of Rafael Jet was questioned? Or how Rashmi Samant was targeted for her Hindu faith. He found it suitable to stalk, harass and publicly defame me because I'm a Hindu. My home state was dragged into it. The university where I pursued my bachelor's degree was dragged into it. And to make it worse, my parents were the topic of the entire discussion there. I cannot believe that a man capable of harassing a student like that is even supposed to be a teacher at a tier 1 university like Oxford or any university or school for that matter. Or how a NASA intern wasn't spared for having Hindu gods and goddesses on her study table. Those who launch protests saying minorities are in danger, they must answer whether Hindu lives matter, because Hindu phobia is real and an entire machinery is creating it. It's an unmissable debate on Honor Live. And ladies and gentlemen, as a channel, we are never in denial. We accept the reality, and the fact is that there is a lobby that says Hindu phobia is a myth. I say Hindu phobia is very, very real. There is a same well-oiled machinery that peddles hate against Hindus. They create insecurity against Hindus. They demonize Hindus. They run down Hindu culture. They abuse Hindutva. They are all part of the Hindu phobia lobby. And we believe we need to have a very strong debate on Hindu phobia in the country now. And with us today is Nupur Sharma, national spokesperson of the BJP and advocate in the Supreme Court, Smita Prakash, editor of ANI, Ratan Sharda, Abhijit Iyer Mitra, Rashmi Samant, activist. And we have with us Advocate Waris Pathan, Sudhindra Bhadoria, we have him of the BSP, we have Abbas Haidar, national spokesperson of the Samajwadi Party, we have Dr. Lubna Kamal from Lucknow, well-known activist, and we have Professor Manojit Mandal from Kolkata. Now, I am only asking you, let us first accept the reality. My first point is that there is a lobby in this country which is creating Hindu phobia. And the first indication of that, and I'm opening the debate with Smita, was when they organized the Dismantling Global Hindutva Conference and amplified it endlessly in September. Smita. It was very clear that it exists, it's strong, it is part of a campaign, and now when we are seeing Hindus being targeted, attacked, killed all over the country, Hindu temples being destroyed,
This lobby does not feel it's answerable. Smita, should it not be answerable? Look, Arnab, interreligious hatred, bigotry, it's not uncommon in India. It's erupted in spasms for centuries in this country. So we have to see it from a bigger perspective. It does seem in your face now, like you say it, because we, as in India, it is under the global scanner. Domestic and international media scrutiny is on India. Every pimple, every scar, every injury to this fabric of India gets amplified further because there are many in the world who want to see India as a democracy fail. They want to see that the fissures which are inherent to a country which is so diverse, these fissures will be there, but we have held together for centuries. But as a democracy, there are many countries that want to see this democracy fail. They want to see it go to pieces. So what happens when there is any kind of violent incident that happens, which is a communal clash, which is a caste-related clash? These fissures, these ruptures, that have, despite these fissures and ruptures, the country is held together. But there are several within the country and outside the country which want to see that this phenomenon leads to a kind of a disruption in India which will make it fail. And what happens within the country? There are many within our country who have for years accepted that this kind of what should I say? It's a fatalism कि ये तो होना ही था, ये तो Hindu-Muslim riots तो होने ही हैं हमारी country में. This kind of fatalistic acceptance of this violence is no longer happening. Now, there is this idea that law and order that should be without any kind of fear or favor. It should be the same for everybody. There should be no appeasement. So that is when there is a kind of an awakening, and this phobia, whether it is anti-Muslim phobia or anti-Hindu phobia, there is now a feeling that there should be none of this, that everybody from every caste, community, religion, everybody places. Mind you, there is also this phobia about Northeasterners. That also, there was this whole thing of Northeasterners. The fact is that there has been an attempt at just abusing the Hindu religion, and I'll put it. There are people who hate Hinduism, and they therefore, for example, they said, Brahminical fascism. The attempt is to say that the Hindu religion is a Brahmanically fascist religion which will be challenged by Dalits. There's also a lot of politics behind it, Sudhindra Badoria. Divide the Hindu religion, abuse the Hindu religion, stereotype the Hindu religion, then call for a Dalit awakening against the Hindu religion. That's why it is things like dismantle Hindutva, Brahminical fascism, somehow divide the Hindu community. And then say that in this country Dalits and Muslims are treated badly, which is also a lie. Let us come together against the Hindus. Why? Mr. Badoria, isn't this Hindu phobia? Yeah, so my answer is, while I agree with Smita Prakash on many of the points that she has raised, I would also like to say that there are interested agencies which want to certainly denigrate India, and they have been there from times immemorial. They have been there from times immemorial, as you may see that in our freedom movement also, this effort was done, and that is a colonized mind which used to do it. But insofar as the inequalities in the systems are concerned, they have been there also. Not to say that there are some people who are more marginalized than the others. No, I want to ask you, this whole argument, for example, Brahminical fascism, 1 minute, that we need Dalitization. Dalitization is a response to Dalitization is a response to Brahminical fascism. In my view, this is nothing but an attempt to divide the Hindu religion. Well, I would create divisions in the Hindu religion. If one were to do that in any other religion among Muslims, there would be an outburst. I don't accept. I don't buy that.
So, but this I don't buy that. I think there is an inequality. There is an exploitative system. And which religion does not have inequality or an exploitative system in parts? Which religion, sir? Name one. Where did I say that? Where did I say? No, this attempt to demonize Hinduism is my concern. If it has it, well, then there is a definite effort, and this is the colonial mind which does it. A colonial mind which does it. But the colonial era is over. But the colonial era is over. We are a democratic country. But the colonial era is over. Yeah, colonial era. So why do some people? Then here's a question. Here's a question. Nopur is on the debate. It's getting interesting. Why do some people say that Hindutva is a national security threat? There is an attempt to demonize Hindutva. Say that every single day there's an attempt to abuse and demonize Hindutva and brand Hinduism as a national security threat. The religion which 80% of this country follows becomes a national security threat. Then what is the solution? Does one want to wipe out Hinduism itself? Now when these questions are asked, Monojit, you are getting uncomfortable, Lubna, so are you. Waris Pathan is uncomfortable. What's the solution? One wants to wipe out Hinduism itself? No, certainly not. Can I comment on this? And that, uncomfortable. Yes. Who said that? Can I comment on this? Not at all. No, then why, if it is not at all, then Lubna, why are people spreading this Hindu phobia lie? Have you heard of saffron terrorism? Pardon me, I haven't. You have? All I know about saffron terrorism, I'll tell you one thing. Using the lie of Ishrat Jahan, who was a terrorist. First of all, Lubna, you accept to me. Was Ishrat Jahan not a terrorist? Because Chidambaram used the case of Ishrat Jahan to talk about saffron terrorism. No, was Ishrat Jahan a terrorist? That is just... Was Ishrat Jahan a terrorist? Was Ishrat Jahan a terrorist? No, I don't know that. Pardon me? No comments. Why? I don't know that. But how do you not know that? She's a terrorist. You don't believe your country's investigating agencies. You are heading a national channel, so you must be aware of saffron terrorism. I am very aware. And therefore, yes, Hindu phobia and Islamophobia even exists. I'm talking about Hindu phobia. I'm talking about Hindu phobia. There are black sheep in each and every community. So you have to pay attention to that as well. Come on, Lubna, don't generalize. Well, why don't you agree with that? You haven't seen what happened with several mosques that saffron flags was put on them. They were huge. That's just adjacent to Lucknow is Sitapur, and there was someone in saffron robes who was saying that he is some who and someone, he was openly challenging that who someone because you know, I'll tell you 1 minute. I'll tell you. I saw a really stupid article which said that, you know, the state and Hindu vigilantes have merged. And that is the problem you have, that some madman, you associate that person with a government which has the majority, which has the majority. Yeah, I'm referring to some madman. I'm saying that somebody says that the state has become vigilante, but this state was elected through a principle of electoral democracy, in which the majority of people, voting population of India, voted the state. You don't like the state, it does not become vigilante by turn. It's Hindutva. One community is demonized over the hijab verdict by the court. You tell me, was it not an enabling of an atmosphere of Hindutva allow me, the High Court, please understand, restrictions on hijabs in schools were enforced by the court. But people like you, Lubna, and please come on the debate with Nopur, you used it to demonize Hindus, saying silent majority watches as a spectacle unfolds. What I'm saying is just... What does the majority community have to do with the court verdict? What does the majority community have to do with a uniform code framed according to the Karnataka Education Act of 1983? You have used every opportunity to demonize Hindus, and I'm saying please don't do it. Please stop demonizing Hindus. Please stop Hinduphobia. No one is doing that. No one is doing that except for this channel.
Yeah, well, I mean, I'll tell you, Hindu lives do matter, right? Where is your outrage? Can I just... No, 1 minute. 1 minute. Lubna, Deepak Parihar was stabbed while being chased down a narrow lane in Jodhpur during the recent clashes in Rajasthan, right? There have been several instances. Why are you singling out few? I am talking about the recent one, Jodhpur. Why don't you want to talk about it? I just mentioned saffron. Why don't you talk? Why don't you talk about it? Why don't you talk about it? I don't believe Chidambaram. I don't believe Chidambaram. You can swear by Chidambaram. I don't believe Chidambaram. Chidambaram and Parambir Singh and people like that were responsible for creating this thing about saffron terrorism. No, I'm asking you. Haven't you seen what happened in Sitapur just few days back? What? Open threat by a Mahant. Can I please... By whom? Arnab, I don't know. Arnab. Which Mahant? Which official position does he hold? How can you say that? You are all that I know, Lubna, is that you are in Lucknow and you should know that the Yogi government, when there were 7 louts who tried to desecrate a mosque, it was the Yogi government which you hate, which took action and arrested all the 7. I won't accept your words. I won't allow that you keep you put your words into my mouth. No. I will not let that happen. I don't hate. Okay, I am on a question. Do Hindu lives not matter? Nupur is on the debate. Why does the life of Nagaraju not matter? Equally, all Indian lives matter. Why can't you say that? No, yeah, all Hindu lives matter. Arnab, all Indian lives matter. How all lives matter, but Hindu lives matter? Why do you get irritated when I say Hindu lives matter? Was Harsha not a Hindu? Was Harsha not a Hindu? Was he not killed for being a Hindu? Was Nagaraju not a Hindu? Was Nagaraju not a Hindu? Was Kishan Bhardwaj not a Hindu? Is Deepak Parihar not a Hindu? Why don't you want me? Was Ranjit Bachchan not a Hindu? Ankit Sharma is not a Hindu? Kamlesh Tiwari was not a Hindu? Ankit Saxena was not a Hindu? Why don't you want to talk about it? See, you're looking the other way now. Now you don't want to talk when I'm giving you name after name and example after example. I am saying all lives matter, but please understand Hindu lives also matter. Yes, of course. Hindu lives also matter. Nupur is on the debate. You're not ready to listen. You're just shouting. You're not listening. Arnab, may I please... Arnab, coming on national television and saying that, all lives matter is mere lip service, a matter of convenience and politics for that matter. If that was the case, if Hindus' lives did matter, I did not hear a single not in my name protest for the lives of Hindus that were lost. I did not hear of a single award vapsi or return of any award, which was undeserved, by the way, in the first place, ever having happened in the memory of a deceased Hindu. And madam, must I actually correct you? Have you not heard of saffron terrorism? Have you not heard of a court verdict in 2019? Arnab, I only speak facts, and I would really request, this is the first time I'm actually intervening, that I may be please allowed my time. Well, madam, I'll tell you what, maybe you haven't heard of the law of the land. In 2019 Samjhauta Blast Express case, a court came down heavily and called saffron terror as a bogey, a phraseology deliberately imposed just to balance out what actually happens in the world. That means I challenge you right now to name one Hindu Sangathan, Hindu organization, Hindu Sanstha, which is banned for terrorist activities. I challenge you to name or cite one case law from any court, forget only India, from any court the world over, which has actually convicted Hindus for spreading terrorism in the name of the religion. For that matter, you will find umpteen Islamic organizations banned and sanctioned by no less than the United Nations. You will find umpteen number of citations and judgments from the world over, wherein people have been convicted for they screamed. Waris, let her complete. Waris, let her complete. Waris, let her complete. I'll come to you. Waris, I'll come to you. Cause, just because I'm exposing something that he truly believes in the sense, spread of terrorism in the name of their God, he will actually heckle me. I challenge them again. Name one Hindu organization banned or sanctioned by the United Nations, and I'm talking facts, and I expect facts, or cite one single judgment. I have cited one of the Samjhauta Express from a Haryana court, which said it's a saffron terror bogey superimposed by politicians for the purposes of their convenience. None of this sort exists, because the world over, forget India,
The world over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god, nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for, suicide bombing after sloganeering Jai Sri Ram or Jai Siya Ram. The fact of the matter is, the world over, you will find umpteen number of examples wherein Allahu Akbar was chanted. And there was a suicide bomber who went off killing himself. There were knife attacks. There were sartan se juda, there was beheading, there were acid attacks, and what have you. It happened in France. What is Recently in the US. It happened 1 minute, what is? No, this is not fair. This is not fair. Give me much opportunity to make my point now. First of all, why are you getting angry? What is just because I'm talking about Hindu phobia? No, 1 minute. No, 1 minute. What is now? There's no point sulking. Okay, I 1 minute. No, that's a very long reply. Please wait. What is see? There's no point sulking. You gave her 1 hour. You gave us 25 minutes. I didn't give her 1 hour. I did not give her 1 hour. That's a lie. Why should we just give? Why we should just keep our mouth shut and sit down and listen to all craps? We are here to. What do you mean listen to crap? Please be careful of the language you use. We are talking about Hindu phobia and you're unhappy about it. Listen, you are going one-way traffic. What is this? Jihadi? Yeah. See, Arnab, Nopur is saying, what is Nopur saying? Jihadi language. See, stone pelting is started. What is this stone pelting? What is this jihadi language? Do you not know how to speak on television? Are you not aware of parliamentary language? I spoke about facts. Against the Muslim community. Show me the judgment. The BJP Show government. me the sanction order of the United Nations. Show me the banning order of the United Nations. The BJP government has waged a war against the Muslim in the country. I will actually object to you using unparliamentary language. Stop using jihad on television. You are making your Stop stone pelting. Stop stone pelting. I don't want to make Stop stone pelting. After you the one. You 15 crore Muslims would teach 100 crore Hindus. I ask you, what was that threat? What was that threat? What was that threat, Mr. Pathan? That you 15 to 20 crore Muslims would teach a lesson to 100 crore Hindus. What was that? A threat? Wasn't it a threat? What was it? He's not answering. Now, may I make my point of she'll go on ranting? Not cite a single judge. No, I won't answer. I don't want to indulge in such kind of debates, man. I am not going to make my point. I will not listen. What are you doing? Allow me. I will make my point. No, you shut down our fader. You shut down our fader if you want a decent debate. We know. अरे हमारे मुंह में भी जुबान है तुम्हारे से अच्छी बात बोल सकता हूँ. तुम्हारे को मुंह पर जवाब दे सकता हूँ. तुम डिबेट छोड़ के भाग जाओगे. You can heckle me. You can abuse on television. I can't even debate courteously. बीच में नए चलो तुम्हारे से वोट आ गए. आप गाली गलौज कर दो. You don't want to have a decent debate. You don't want to have a decent debate. You don't want to have a decent debate. Get lost. अरे मैं आपसे बहुत अच्छी तमीज से बात कर सकता हूँ. मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते. डिबेट छोड़ के भागेंगे आप दोनों. डिबेट छोड़ के भागेंगे आप. अरे बोलने नहीं देगा एक ही. Otherwise he'll kill me. He's threatening that I get lost. Otherwise what will you do? What will you do? Mr. Pathan, what will you do? अरे I will make my point. I will make my point. I don't want to No, I will make my point. Please I don't want to listen to a crap. Do it decently. Arnab introduced you as a lawyer, but I don't think you are a lawyer. You don't want to debate. You don't want to listen to the truth. You don't want to listen to the fact. Don't spread jihad. Okay, question here. Nopur. Now you have your say. I'll get Ratan Sharda into the debate, and I ask Waris Pathan a question. Waris. Listen to the question. Why are you giving a statement? Why don't you listen to my question? I have a question for you. Mr. Pathan. I won't listen to your question. First you listen to my answer. First you listen to my question. How can you answer a question? You listen to my question, and my question is this. My question is... Yeah, we have been listening to your question since last almost 1 hour. Why don't you listen to our No, answer? not 1 hour, about 20 minutes. Please don't exaggerate. Now listen to me. Listen to me. The truth. No, this is Yeah, the truth is that Harsha was killed because he was a Hindu. Is that the truth? Was Harsha killed because he was a Hindu? Tabrez, Akhlaq, so many I can name. There is a list of Muslims who have been killed. Was Harsha killed because he was a Hindu? The Modi government has spread hatred in our country. Who's an Indian? Everybody is an Indian. First, Indian lives matter. Whether Harsha, Tabrez, Akhlaq, whosoever may be.
Indian lives matter, Arnav. First talk about the Indian. Be a good Indian citizen. First, be a good Indian citizen and talk about Harsha. You care about Tabrez. What about Tabrez? You care about all citizens. You care about all citizens, do you? You were quiet and silent. No, I'm asking a simple question. No, do you care about all citizens? I'm asking you, do you care about all citizens? Do you care about all citizens? Do you care about all citizens? Show me a single incident in our country. Do you show me a single instance in our country where some Muslim mob, after offering their prayers, stood outside a temple, gave provocative slogans, went upside the temple and tried to hoist a flag? Nobody. Millions offered prayers this Eid just 3 days prior. Nobody. But so what happened during the Shobha Yatra? They went near the mosque, shouted provocative slogans, went on the temple, went on the mosque with a flag, tried to hoist. And that is Have you finished? If you finished, I'll counter you. If you finished, I'll counter you. If you finished, I'll counter you. Now you stop, sir. Waris, you asked a question, no? Waris, you. And you are quiet and silent on that. Stop getting excited like that. You think people will be impressed like this? Why don't you talk about that? You think you're impressing people by shouting like this? Why you are siding? You are an anchor. You are an anchor. You have to listen to both the sides. Just don't give it opportunity to the BJP people to make their points and to us. Just keep quiet and listen to the rights. No. Equality before law, equality before now we'll play the victim card. The constitution, if you follow, I also follow the constitution. Allow me to make my point. Simple thing. Why? When will Modi stop this Mahapanchayat? When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the gun like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. A cricketer got his finger fractured, Modi tweeted. But so many Muslims, establishments, shops, homes were demolished by the bulldozer. Modi did not have time to tweet a single sentence, single line condemning the act. Unless and until Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them. These are Modi's foot soldiers who every day in and out wants to see that the Muslims of these countries are totally finished. They started with hijab, they went on halal meat, now they are coming on this loudspeaker. So where would we go? See, we if you have finished, and we are living in our country. If you have finished now, thank you, yeah. Now, thank you. Now, Waris, now stop, okay? I can also, please don't go on non-stop as if you have a divine right to speak. Listen to me first of all and stop lying. Stop lying. Stop lying on television. Stop lying on television. Stop lying on television. You're lying on television. Shame on you. अरे सच बोला हमने सच हो गया ना आपका हो गया वारिस is on the waris Ratan Sharda is on the debate. He says what happened to Kali Charan Maharaj who made derogatory statements about Mahatma Gandhi? Narendra Modi told him to. So why was he arrested? And who gave him bail? Let Waris be on the debate on the right. Anand, please. My question is, be quiet now. I am countering you. I am smashing your argument. I am destroying your logic. I am exposing you on national television. Kali Chand Maharaj was arrested and was given bail by the Bilaspur court. Did the Bilaspur court call Narendra Modi and ask him, dear Prime Minister, do we give him bail? And did Narendra Modi tell the Bilaspur court, yes, give them bail? Do you know how the courts function? Don't lie on television, Waris Pathan. These are the kind of falsehoods which must stop now. On Bajrang Muni's home. Why no bulldozer? When a Muslim is arrested, you apply NSA. When a Hindu is arrested, you don't apply that. Is this not differentiating between the two communities? I'll tell you what is differentiating. I'll tell you what is. I also 1 minute. The very fact. May I come in? You must speak about equality before I'll tell you what is differentiating. 1 minute. Waris just stop right now. What is differentiating is that Waris is from a party called All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin, a party which by its name is of Muslims, by Muslims and for Muslims. No. A party which by its name is of Muslims, by Muslims and for Muslims. Why are you not a party for all? Why only for Muslims? Why should there be a party for Muslims? Why not for all Indian citizens? Why define a party along the lines of a religion? Does that not go fundamentally against the principle of the Representation of People's Act? You don't even respect
respect the Election Commission and the Constitution of this country. You say that if you remove, the 15% will be bhari on the rest of the 80%. You speak absolutely venomous language like that, and you come on television and lecture me, Waris Pathan. Now listen to me. I am asking you, Ratan Sharda, I'll tell you Hindu phobia, Ratan Sharda was when Nagaraju was killed and Waris Pathan's party decided to say or do nothing. When Nagaraju was killed for being a Hindu, all his party's top leaders are in Hyderabad. Which one of them, Ratan Sharda, please ask him, which one of them had a protest march? That is Hindu phobia. That is Hindu phobia, ladies and gentlemen. That is Hindu phobia. I have no interest in this blabbering person. He's not stopping, Ratan Sharda, continue. This debate was about Hindu phobia. It was not about Hindu-Muslim, first of all. Yeah. Secondly, when he talks of this particular issue of Tabriz and Ansari, you have already given a list of more than a dozen Hindus who were killed in recent couple of years. I'm not going back 50 years. I'm talking about recent past. More Gau Rakshaks were killed than Gau Protectors were killed. Now let me come to the main subject. He said that 15 crore Muslims will be heavier on 100 crore Hindus, right? अरे भैया चुप कर अभी हो गया आपका बड़बड़ हो गया चुप करो अभी बहुत बड़बड़ कर लिया आपने आपका काम ही है आप खाली बड़बड़ करते हुए सुन लो अभी आप Big debate, Waris, please control yourself, man, please. You have to stop. National television. You got to stop. When Tamil Nadu government stops Dharampuri Adhinam function, that is Hindu phobia. अरे जाओ यार तुम अपने घर जाओ सामने तस्वीर देख रहे हो भीम मीम की क्या हो रहा है भीम मीम का इसलिए चुप करो भी चुप करो आपको चिल्लाना है तो बाहर जाके चिल्लाओ ये पब्लिक मीटिंग नहीं है Okay. Stop it right now, Bob. Come on now, Waris Pathan, control yourself. Waris Pathan, control yourself. This is an important debate. People are watching. Please. Waris, please. When I speak truth. No, Waris, please. I said. Waris, don't cross the limit. Please. Thank you. I said Hindu phobia is when Dharampuri Adhinam function is stopped by DMK government. Okay, there is no Muslim here. Please shut up now. That was done by a so-called Dravid party against the Hindu tradition of 100 years. They had no business to do it. Secondly, this Hindu phobia starts right from Nehru's time when he created Hindu code bill but did not have courage to create any other code bill. He slapped Hindu sadhus for demanding Gau Raksha. Would he slap any other person of any religion? He would not do it. Next stage of subsequent terror was when in 1993 Sharad Pawar created an artificial bomb saying that there was to make the terror attack secular. Then in 26/11 again, they talked about separate terror, but for Tukaram Bombale, we would have had a Hindu terror story around the world. Now, that particular case, it was only because of Bombale. And what happened? The Congress party went ahead and released a book called RSS Ki Sazish. Then we had separate terror of train blast, of Maligaon blast. All the cases fell through. Of course, you talked about the girl who was a terror suspect, and world over she was named as a Shaheed. And he said there was no such terror. Now, next to it is when you had communal violence bill created by UPA, which said Hindus are a priori, attack us in case. अरे बाबा चुप कर भाई तेरे को समझ में आता नहीं कुछ भाई तू रह ना तेरे समझ में आता है तेरे से बात कर रहा हूँ मैं तेरे से बात कर रहा हूँ मैं समझ में आता है मैंने हिंदुओं की बात की तेरी बात की क्या मैंने से बात कर रहा हूँ अरे सुन रहा है कम्युनल वायलेंस बिल बात कर रहा हूँ क्या कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस पार्टी मैं अर्नब से बात कर रहा हूँ गुंडा लोग कहाँ से मैं अर्नब से बात कर रहा हूँ तेरे से बात कर रहा हूँ सड़क वाले लोग तेरे से कम गुंडे हम लोग देखने गए कौन धमकी दे रहा है तू सड़क छाप है का सड़क छाप धमकी दी तूने धमकी दी किसने धमकी दी तूने क्यों बोला मेरे को तू तलक से बात करेगा तू तलक से बात करेगा तू तलक से बात नहीं करना मेरे से जुबान संभाल के बात करते नहीं ओके आप साहब तेरी जुबान संभाल के बात कर साहब की 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे वाले साहब आप मुझे बताइए हाँ क्योंकि आपको यही भाषा समझ में आती है आपका जो फाउंडर था ना वो फाउंडर पाकिस्तान भाग गया आपकी वेबसाइट उसका नाम निकाल दिया गया पर आपने कहीं माफी नहीं मांगी हिंदुओं को मारने की हैदराबाद में कभी नहीं मांगी एमआईएम ने माफी और एमआईएम का जो बंदा था वो पाकिस्तान चला गया उसका नाम वेब से निकाल दिया अपने साइट से निकाल दिया अभी आप बात कर रहे हो हिंदू कोड बिल I talked about colonized by the talked about Mamata Banerjee said recently that हम काफिर नहीं है हम डरपोक हैं हम लड़ेंगे now tell me a secular lady called Mamata Banerjee talks of हम काफिर नहीं है what is his language
Whom is she threatening? And what is this language? This is what I fear. And this particular case of terror is not just India. This is globally created story against Hindus. Whether in academia you talk about dismantling Hindutva, again, they are talking the same language. They created a term called Islamophobia, but attack is now on they Hindus don't in want to Ramnami, accept the and reality. you talk it like that. I have a thank you. I have a couple of questions here. You know, I think that what has happened is we have opened up some very we've opened up some for every other religion but Hindus. We've opened up some very and they talked about geography. Just a moment. No, 1 minute. Ratan Sharda, what is evident to me, what we have done today, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh were Hindu. What we have done today, because there was no one in the majority. what we have done today, problem rose on that account. what we have done today. Hindu phobia is to stop unity of India. What we have done today, Ratan Sharda, just a minute, is that we are asking a question that is not asked. Because Monojit Mandal, allow me to just a minute. You see, people speak about Islamophobia, but nobody speaks openly, especially not on national television, about Hindu phobia. But Hindu phobia is a reality. My question being, and I'll only argue with fact, and Rashmi Samanta is on the debate with you. Those in denial about the reality about Hindu phobia, and if we don't confront the growing problem of Hindu phobia in this country, there is a problem for the future of this country. For Hindu culture and tradition is inextricably linked to India's culture and tradition. Hindu phobia is there. If Hindu phobia was not there, why is there an exodus of Hindus in Khargon? Khargon, Hindus have to flee in terror, leaving behind barely any Hindu families. And when I discuss it, I find some protagonists smiling and laughing. Hindu families are forced to vacate houses in Vanajaravas in Gujarat. Petrol bombs and stones are hurled at the houses of Hindus during Ram Navami in that place in Gujarat. Hindus are forced to leave their homes. Does the national media talk about it? No. Because one is not supposed to. As per the rules of the media in India so far, one is not supposed to talk about Hindus being attacked and targeted, because the impression has been created, as was done during that communal violence bill also, that Hindus are always the perpetrators of violence, they can never be the victims. I am now telling you with proof, Monojit, Hindus have been tremendous victims of violence and Hindu phobia. Now, can I come in? And Hindu phobia. See what happened in Ratlam district. The harassment by the Muslims of the Hindus, Hindus migrating, houses put up, Bhopal Surana village, house on sale. Why? Because the local Muslims were harassing the Hindus for years. You see? Monojit, don't look upset. The fact of the matter is, you go to Aligarh in Nurpur, you go and ask in Aligarh in Nurpur, what happened to the Hindus? What happened to the Hindus in Aligarh in Nurpur? Why are they being forced to leave their houses, put up for sale? The bad mouthing for the last half an hour. What is the bad mouthing? I'm just tired. Who am I bad mouthing? Who am I bad mouthing? How you are conducting the debate, Arnav? I mean, look. I am talking how people are behaving on your show. That's no, that I don't approve the behavior. But that reflects upon the real India, right? If we quarrel like that on national TV, and our children are watching, that's okay. What will happen to on the ground? Let me tell you, we're coming to the question of phobia of one particular community against the other. I think people of this country, whoever is opposing a particular government which is in the in the current dispensation in India, they are scared. I mean, look how you are doing with the opposition, irrespective of their color. I mean, it's a phobia against a particular government. You use your ED, you CVR, you income tax. I am talking about Hindu phobia. You brought the agencies in. People. And yes, it's not. There's no question of Hindu phobia. I mean, how are you dealing with these people if they are opposing you politically, right? It's not the question. This is not political. Calling it political, you're whitewashing the gravity. Let me tell you, please. You are scaring now. You are scaring. This is scary. This is scary. I mean, when you don't let us speak on TV, when you muzzle our voice on TV, that is scaring. You scuttle our fundamental rights even on TV, that is scaring, because we are affiliated to a particular ideology, and you are affiliated to a particular ideology which is ruling the country.
That is a phobia for all of us. No. We can't even talk freely on TV. Rashmi, 50-50. I speak of Hinduphobia from a personal experience because it was something I had to experience at a very young age on a very international stage, on a very international platform. You are whitewashing. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hinduphobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience, and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hinduphobia. Exactly. This is gagging violence. survivors. This is the violence that is reflected on the ground. It is created by you. It is there in your mind. It is created. It is not in her mind. It is not in her mind. Monojit, it's not in her mind. She has said it's a lived experience. She has said it's a lived experience. It's not in her mind. Let me even complete one single sentence. Let me complete a single sentence. You're scared of listening to the truth. That's the phobia. She wants to give you an example. I'm scared of going through what I went again because of people like you who enable such things. You know what I'm scared of? I'm scared of going through such experiences again and again and again in my own life. I speak of this from my personal life, and you're not letting me elaborate. Do you even want to listen to what I went through? Do you even want to listen to what Hinduphobia is? You think violent. You speak violent. You are the most violent. I don't speak violence. I'm trying to tell you what I survived. Speak, breathe, think violent. Violence is everything that's on your mind, and you're whitewashing a survivor's experience by not listening to their perspective. That is the problem. That is the problem with bigots in this country, that they want to gag real stories out there. They want to gag stories of the likes of Harsha. They want to gag the stories of the likes of what happened in Hyderabad. You know, you look like an intolerant right now because you don't want to listen to the story of survivors. That is intolerance. Just use your idea of Hindutva to create a vote bank and nothing else. You are destroying the multicultural plurality of this country. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. Show some equality, show some decency when you come for a debate. Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl, and Ankit Saxena would be murdered, butchered, and perhaps lynched by a mob because he fell in love with a Muslim woman. Violence is everything that's on your mind, and you're whitewashing a survivor's experience by not listening to their perspective. That is the problem. That is the problem with bigots in this country, that they want to gag real stories out there. They want to gag stories of the likes of Harsha. They want to gag the stories of the likes of what happened in Hyderabad. You know, you look like an intolerant right now because you don't want to listen to the story of survivors. यही वो मस्जिद है जिसके अंदर जो है सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम जब पहुंच चुकी है तो ऐसे में सर्वे जो है शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए ये जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, दरअसल इसी गुंबद के नीचे कहा जाता है कि देखिए वो वापी जो है मौजूद है, वो कुआं जो है मौजूद है जिसमें एक ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, इस गुंबद के पीछे देखिए गौरी श्रृंगार का वो मंदिर है जहाँ पर महिलाएं जो है चाहती है, वो याचिका दायर की गई है जिसमें वो महिलाएं चाहती है कि देखिए हम जो है रोज पूजा अर्चना कर सके, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म जो है खुद चुन सकते हैं। The term of French President Emmanuel Macron was inaugurated for a second time. The inauguration was carried out in a ceremony at the Élysée Presidential Palace in Paris.
Macron was re-elected for the term of a period of 5 years in an election runoff that saw him win over far-right candidate Marine Le Pen. Macron was given the necklace of Grand Master of the Legion of Honor, France's highest distinction, before making a speech. 21 cannon shots were fired in a grand manner, marking the event. The troops present at the ceremony belonged to the naval unit of particular significance. The crew was a part of the Monde, France's second biggest military ship, which central element of France's nuclear dissuasion. It was notably used for the tests of France's nuclear-capable submarine-launched M51 missiles. The symbol can be seen as a show of force at times when France is deeply involved in efforts to stop Russia's war against Ukraine. Russia's celebration of the win against the Nazis in the Second World War is being celebrated in Moscow. Known as the Victory Day, the country will celebrate the commemorative festival by carrying out a parade. More than 11,000 troops will take part in events for Victory Day. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. People like Waris Pathan, no put. These two esteemed panelists on your show, not only has Hindu phobia been proven, just because investigative agencies are working, a Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को एक बड़ी राहत मिली है। 10 मई तक कोई भी अरेस्ट नहीं होगी, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं, क्योंकि आधी रात को ये पिटीशन फाइल की गई और आधी रात को ये हेयरिंग हुई। हेयरिंग में तेजिंदर पाल बग्गा के डिफेंस लॉयर भी मौजूद थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे और एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे। एक बड़ी बहस के बाद ये बात पर फैसला लिया गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की तरफ से कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगली डेट जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर है वो 10 मई है। लेकिन तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी पिटीशन में ये मेंशन किया था, जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट किए गए हैं जारी, वो एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की लिए किए गए हैं। और इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने ये ऑर्डर और डायरेक्शंस रिलीज की हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि 10 मई तक कोई भी गिरफ्तारी तेजिंदर पाल बग्गा की नहीं होगी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मेंबर हूं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो सही बात है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी है। देश में हजारों कल्चर्स हैं, हजारों ज़बानें हैं, हजारों आपके 100 रिलीजन्स हैं। ये देश की खूबसूरती है। आप एक कोर्ट को कैसे लाएंगे? भाई मेरे को असदुद्दीन ओवैसी को राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत, वो एब्सोल्यूट राइट है। आप कैसे उसको इम्पोज करेंगे मेरे आर्टिकल 29 के ऊपर?
आप होते हैं कौन है? नहीं, सेंसस तो होगा, सेंसस तो होगा, सेंसस को सपोर्ट करता हूं, एनआरसी एनपीआर को सपोर्ट नहीं करता हूं मैं। और सेंसस अलग है, एनपीआर एनआरसी अलग है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये इंसिडेंट हुआ, आपने कल कंडेम किया, लेकिन मैडम देखिए, ईद के दूसरे दिन का दर्दनाक वाकया है, कंडेमनेबल है और हर एक को कंडेम करना चाहिए। हमने भी उसको कंडेम किया और मेरा मानना यह है कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन No, what I've seen so far, what I'm seeing so far, what I'm seeing so far on the debate, Monojit. That there are some people who are termite and they must be driven out of this country. That is scary. That is scary. You are creating fear in the minds of people, irrespective of religion. The behavior of two certain gentlemen. Can I come in, please, Anand? The behavior of two gentlemen. Just one minute. I'm bringing Abbas Haider back on the debate with Nupur, and I want to say one thing to your viewers. Sometimes, it's quite evident out here that in the course of this debate, there are some people like Waris and Monojit who just don't want to hear anything about Hindu phobia existing. They just don't know. Now he's speaking. Anand, I need someone to manage the audio. My question is, Monojit, just take a break. Just take a break. You don't want to hear about it. You know why? 300-year-old Shiva temple is destroyed. Okay? Sculptures, shivling, destroyed. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. People like Waris Pathan, Nupur. They won't say anything. The Shitala Mata temple in Khargon was vandalized. The Shitala Mata temple in Khargon was vandalized. Hindu temples are still under government control. No, listen, Waris, I'll tell you. This is the extent of Hindu phobia in this country. People were attacked near a Kali Mata temple by a pro-Khalistani group. It happened in Patiala. It is happening in BJP rule state. No, it's not a BJP or non-BJP rule state. It's about Hindus being under attack. It's about Hindu hate. It's about violence against Hindus. Yes. You did not allow Durga Puja to happen in Kanpur. I have an observation. You did not allow Durga Puja to happen in Lucknow. I have a small observation. Looking at the behavior of two gentlemen on your show, these two esteemed panelists on your show, not only has Hindu phobia been proven, but also the rampant existence of Islamic fundamentalism. The fact that Wahhabism actually exists in the mindset of some Indians, that is but obvious. And point number two, Arna. No, you don't teach us. I never heard of an illogical argument like this before. First of all, you use proper language. I have never heard of an illogical argument like this before. That just because investigative agencies are working, show some equality, show some decency when you come for a debate. Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl, and Ankit Saxena would be murdered, butchered, and perhaps lynched by a mob because he fell in love with a Muslim woman, much like Nagaraju, much like Mr. Dhruv Tyagi, because he objected to his minor Hindu daughter being eve-teased by a Muslim eve-teaser. Dhruv Tyagi was killed in Delhi by an entire family where the mother of the Nupur and this both audio is bad. Passed on a sword-like thing in the hands, a mother passed on a sword-like thing in the hands of a Muslim eve-teasing son but don't use such kind of words that a particular community you belong to the majority. But Modi has waged a war against the Muslims of the country, which is evident from the fact which we are every day watching. Everybody in the nation is seeing that what is going on against the Muslims. In Jahangirpuri, what happened, Ardab? A bulldozer went there, demolished the homes, establishment of the Muslims. Only of one particular community home sells. No poor. Against the Bajrang Muni. But they will never be able to name, the Maulvi, the 48-year-old Maulvi who raped a 12-year-old minor girl in a Delhi-based mosque. Do you remember his name?
You remember Bajrang Muni for the threat he gave verbally. Do you remember the name of the rapist Maulvi Ilyas? No, you would not remember. You would remember that there are miscreants in Ayodhya who were actually apprehensively arrested. This is the answer. This is the answer to all the debate. The entire debate, my answer is simple. Give me the answer to my question. Did any Muslim? I want to come back. One minute. I think Smita and I want Abbas to come on it, and Abbas has not spoken, and then I'll come to Smita. You see, Abbas, the problem is whenever somebody says that in some places, I am not saying Muslims are carrying out violence, I am saying some Muslims are. Right? But what I am saying to you is, at least this much honesty to say Hindus are being attacked. The problem happens when you don't want to accept the fact. Not just Hindus being attacked in India, Smita. Look at what is happening. Look at the Hindu phobia in Bangladesh. Look at the Islamic fundamentalism in Bangladesh. And ever since Islamic fundamentalism has been on the rise in Bangladesh, have Hindus not been consistently attacked in Bangladesh, Abbas? Let me understand from you. My information, Abbas, is 3,600 separate attacks targeting Hindus in Bangladesh since 2013, which means one attack on Hindus a day in Bangladesh because of Islamic fundamentalists. True or false? See, Hindus and Muslims, they all want to live together peacefully. No, see, again you're giving motherhood statements when I'm giving a very specific point. I am saying, are Hindus being targeted, and is there violence against Hindus or not? No, I am asking you, why don't you accept it? Will you become a smaller person if you accept that Hindus are being targeted? Let me speak. See, they have been living together peacefully since centuries. Again, motherhood statement. Be it Hindu phobia, Islamophobia, Christian phobia, whatever it is. Be it. I'm not talking about be it. I am saying, is there violence against Hindus in India growing or not? There is violence against all the communities in this country. And who is getting benefited out of it? That is the question. Okay, if you are talking about... The question is there... I'll talk about benefits later. Mr. Abbas, will you be so kind, and I'll tell you one thing. Please understand, even when Hindus are the victims, there are some people who blame Hindus. I'll give you an example. There are widespread attacks on Hindu rallies during Ram Navami. There are videos put out, Smita, on Republic about the rallies being stone pelted on, temples being attacked and destroyed. But who does the lobby target? The lobby targets the Hindus. They say, why did the Hindus go near Muslim areas? Now, what the hell is a Muslim area? Why has this become a Hindu-Muslim thing? It's not a Hindu-Muslim thing. It is a reality. Hindus are being targeted. Okay, then why are we not talking about a 13-year-old Hindu girl, a gang rape victim being raped by SHO in Uttar Pradesh? She is also a Hindu. Of course, we are talking about everything. I am talking about everything. I am asking you, were Hindus, no, why, don't do this if, why, but, whatever. Don't do whataboutery with me. I'll ask you a very simple question. Very simple question. Listen to me. Were Hindus attacked in Karoli for their bike rallies for celebrating the Hindu New Year? True or false? What did the civil rights group demand? The civil rights group, 1 minute, called for the refusal of the permission for religious procession to Hindu groups, which means the civil rights groups are saying Hindus must not be allowed to celebrate the Hindu New Year. This is Hindu phobia. Every just citizen of this country will definitely criticize. I just don't. So many examples. Every citizen. I think you're being blind about it. I've given you so many examples. See, Smita, I've given so many examples, but he's just not listening now. No, you're not listening. Like about Kashmiri Pandits, you don't listen. You say there was no genocide, where aise hi chale gaye. Let me speak. No, you are in denial about the fact that Hindus are being targeted. I'm not being in denial. You are, and it's very unfortunate that you are. Presenting facts.
because we are being selective on cases. We are selectively talking about one person. We're not talking about the 8 girls getting raped in Uttar Pradesh in just one day. They are Hindu. We're not talking about that. We are just trying to make this a Hindu-Muslim issue. When Hindus and Muslims, they have peacefully coexisted in this country. They want to live peacefully. Now, Hinduism is the religion of tolerance. It gives space to its followers. You can be a Bhakt of Bhagwan Ram or Bhagwan Hanuman or Shri Krishna. But no matter, even if you don't, do any puja, you even then a Hindu. Now, the religion which is giving you, which is a religion of tolerance, which gives you so much space, under the name of that religion, if somebody I truly am not understanding your logic, sir. I truly am not understanding your logic, sir. You always say Muslims are in danger. You always say Muslims are in danger. But I want to ask you, and Waris Pathan is going to run away when I ask him the next question, Smita. I'm going to ask him the next question, Smita. Waris Pathan will run away from the debate. No. 7 Hindus are arrested for offensive posters in Ayodhya in front of a mosque. 7 Hindus are arrested. Are Muslims in danger? Smita? 7 Hindus are arrested. India has the highest number of mosques in the world at 300,000. Jahangirpuri, on whom the NSA has been applied. In Jahangirpuri riot case, NSA is applied only on one particular community, not on the others. Shops and establishments of one particular community have been bulldozed. Because not they about are the perpetrators. Only isolated incidents. Nupur and Waris. It was a pre-planned conspiracy in Jahangirpuri. Jahangirpuri was a pre-planned conspiracy, and without giving a notice, you go there and you bulldoze the homes and establishment of the Muslims. Notice is not necessary. So you won't follow the rule of law. You don't want to follow the constitution. You just want to go there, take the bulldozer and demolish the houses of the Muslims. Arnab, you spoke about Khargoon. Kindly come with me to Khargoon and see how many Muslims' houses have been demolished by the bulldozer. Kindly come with me to Gujarat, Khambat. I will take you to Khambat and kindly see how many Muslims' homes and establishments have been bulldozed, demolished by the bulldozer. Why don't you talk about that? Why don't you talk about that? We are talking about the Constitution. We are talking about rule of law. But here you want to follow the rule of bulldozer. So it may be. What can we do? What message are we sending to the world at large? What message? I am asking you a question without a notice. You are a lawyer. You are a lawyer. Without giving a notice, can you demolish the place or establishment of a person? Can you demolish? Can you demolish? No, you are a lawyer. You say you are a lawyer. So answer to my question, Nupur sister, I am asking you a simple question. If you are a lawyer, you answer to my sister, simple question, sister. Can you demolish residence premises? Yeah, he did that action. Challenging the judiciary. Without issuing a notice, can you? Ansar did this Pushpa action, challenging the judiciary. Clearly these Pandus do not believe in the rule of the law. They only believe in Sharia. They only believe in stone pelting. They only believe in petrol bomb pelting. They do not believe in law of the land. And that's why, the swords were being wielded by Muslims. It's a fact I'm quoting from Rohini courts. It was not Hindus. They had pre-planned this conspiracy, much like Khargoon, much like Karoli, much like in Gujarat as well. They hate Hindus. It's a challenge. It's a challenge to kufr ho. They are not Hindus. Don't give a certificate of Hinduism to yourself. Take the certificate from people. Nobody calls you a good Hindu. You are creating a violence atmosphere. You are creating a atmosphere of hatred. We took out a procession of Eid. Arnab, we went for a Eid prayer. We came back from the Eid prayer. Did any untoward incident took place in the entire country? No. But when the Shobha Yatra took place, No. You don't want to address. I'd like to go back to Smita. Waris Pathan. Smita, please. You see, Waris is in denial. Waris, 1 minute. Waris, 1 minute. Now I'm going to catch you. I'm going to catch you now, Waris. I'm going to catch you, Waris. Waris, can you be quiet? Waris, quiet, please. Don't try to bulldoze here on the program, okay? Now, Smita, a leader of the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin was arrested for organizing the communal violence in Hobali. Waris Pathan said, I will pit 15 crore Muslims against the Hindus.
100 करोड़ 1000 करोड़ के ऊपर भारी है, ये याद रखना, है ना? And his top boss, Asaduddin Owaisi, went into a public meeting to link Pan to the ability to have children and went on to make the most disgraceful comments about Hindus, right? About the potency of Hindus. You even asked Muslims to stop being coolies of secularism. 1 minute. Asaduddin Owaisi said, since we are talking about Hindutva, we should talk very openly today, very openly. He said, they use secularism all the time, Smita. Will you stop, please? What is this, yaar? I'm asking you 5 times to stop. Is eating pan an offense in our country now, Mr. Arnab Goswami? Is eating pan an offense? If eating Tara Pan from Aurangabad, the famous pan shop seller sells it, is eating that an offense? No! It's not. But to say, one minute, but to say, and I'll quote it. You know the kind of offensive comment he made, and please be quiet now. Okay, when I'm speaking, because I don't want to be interrupted. He said, do the Hindus have the ability to produce children? This is the statement he made. And he said they are telling Hindus to create many children, to have many children. I can say to you, he says, please be quiet. I can say to you, he says, that you cannot even produce one child. He's saying Hindus are impotent. Now you are going to ask, and then he says, please come to Aurangabad, have a Tara Pan shop. If you eat a pan of 5,000 rupees, the job will be done. The job, did he say that or not? Did he make that comment about Hindus or not? You want me to go into more details? That is Hindu phobia. That is Hindu phobia. That is Hindu hate. That is vicious Hindu hate. And I'm saying it clearly now. And I'm asking now. He said, stop being coolies of secularism. Who makes these comments? August 2019, don't shout at me. Smita, he said, the most important point is that Muslims should realize we should stop being coolies of secularism. Yes, right? Why? So why we follow the constitution? Now earlier panelists said, Nupur said that we will not follow the constitution, we will throw away you, we will use the bulldozer, we will go there, demolish your heart. Hindu phobia is live on the program and it's being uttered by Waris Pathan. I get a response from Smita's turn, thank you. You see, so much Hindu phobia by you on the program itself, Smita. I have no wish to debate with people who talk about Mutor Jawab and sexual potency of Hindus and people like that. I'm not interested in talking about any of that. Nor am I willing to see this as a Bengali issue or a UP issue like some of your panelists have done. If a politician is from Bengal, he's talking about Hindu phobia or non-Hindu phobia in Bengal or Bangladesh. And if there's a UP politician, he wants to talk about Hindu phobia or Muslim phobia in Uttar Pradesh. They are all coming with their political agendas and nothing else. Now, your religiously divisive political agenda that many think is a formula to win elections, it might give dividends in the short term. But if national good is in their heart, they have to reconsider about what they are doing. If they are living by an ideology and which talks about killing and maiming people of another religion, they really have to answer their conscience. And coming out here and giving hate speech couched in talking as if they're giving some kind of gyan about religion, I think it's terrible, because it's easy to be cynical and commenting on political affairs by making these ridiculous comments, but what is going to get them is fine. They'll get some talis out there from their own community, they'll get some clicks, but they'll get some social media followers because of the bizarre comments that they make on television. But I'm sorry, if these kind of populist agendas are going to overturn a national good, then they've got to rethink about what their politics is all about. Yeah, but principally the fact of the matter is we've had a 1-hour debate and people like Lubna feel very, very uncomfortable with it. You see, what's happening, Lubna, is any display of Hindu culture is attacked. We have Rashmi Samant on the program. You know something? We should be proud of Rashmi Samant, that an Indian graduate went to a top British university, became president of the Students' Union, right? But what happened? She was targeted. You know why she was targeted?
You know why she was targeted? She was targeted because she is a proud Hindu. Lubna, are you hearing me? She was trolled. Her devout Hindu parents were accused of racism. She was accused of racism, xenophobia, being a Hitler fan. Her family and she were attacked for being Hitler's genocides, transphobia. And because she's a Hindu, it's okay. If she'd been a Muslim, you would have made it a big deal, Lubna. But because she's a Hindu, do you get some kind of satisfaction that a person is attacked for being a Hindu? Okay, but that is because your channel and you are not doing your jobs. You project an honor killing as Hindu phobia. Now, where does that What make is an sense? honor killing, please? Whose honor? You're not aware? Whose honor? I am not aware. All that I know was that Nagaraj was killed for being a Hindu man who married a Muslim girl. And the Muslim girls, brothers, thought that a Hindu man marrying their sister deserved to be killed. So he was killed for being a Hindu. No, he was killed for being a Hindu. No. You project an honor killing. What is an honor killing, Baba? It's because he's a Hindu, right? So the honor was affected because a Muslim girl marrying a Hindu, according to the brothers of the Muslim girl, is attacking the honor of the family. So in any ways, he was being targeted for being a Hindu. He was being targeted for being a Hindu. Sometimes I will be a target, and at other times Rashmi will be a target. What do you mean sometimes I will be, he will be? No, you are trivializing it. I'm addressing specifically Rashmi. Rashmi. And that is because you people are not doing your job well. Anti-Hindu bigotry is worldwide, and it's been on the rise because Abrahamic text of your religion, they support violence against Kafirs. Hindus were attacked. There is no Hindu procession which is complete in India right now without having stone pelted on Hindus. Right now, Ram Navami, in the last 2 months itself, Ram Navami, Hindus were pelted. Pan-India, irrespective of who's in power, irrespective of which political party was in power, Hindus were attacked. Second of all, on Hanuman Jayanti, Hindus were again pelted upon. On a day which you celebrated as Eid and we celebrated as Akshay Tritiya, in Jodhpur, Hindu systems were attacked again. There was again violence. Hindus have been attacked over and over again, and you cannot see this. This has been happening since the 12th century. The Islamist conquest of India is one of the bloodiest in the history. And this is what Will Durant said about history. This is history. There has never been peace and brotherhood. This is just propaganda. Since 12th century, there has been anti-Hindu bigotry, and it has just been whitewashed by the likes of you, who either choose to play victim on one side, or you try to whitewash. So you do this, in turns. You take turns to either whitewash or to play the victim. That's it. Basically, what's happening is we have wolves who are disguised in sheepskin, and they're just propagating anti-Hindu bigotry. I'll tell you the extent of anti-Hindu bigotry, Rashmi, and I'll give one more example. Nupur. We respect all religions. But when a Greek priest from the Orthodox Church, when he blesses Rafale jets that the Greeks received from France, it's secular. But when the defense minister receives the Rafale jets, and when there is a simple Shastra Puja, which according to Hindu culture and tradition is the weapon worship of the weapon. Yes. Worship of the weapon. Oh my God! The Rafales have become Hindu. They said. Who you? No. You all went crazy. Oh my God! We have a Hindu Air Force. No, it was said. Monojit, Nupur, was it said or not? When Rajnath Singh went, after India got its first Rafale jet, the way you behaved when there was a Shastra Puja, that is Hindu phobia. थोड़ा सिंदूर लगाओ, हमने भी लगाया हमारे गाड़ी में, बाइक में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? You are critical. There is a natural hatred for all things Hindu. Even Hindus are ashamed. So-called liberal, deep state, Lutyens lobby is ashamed of ourselves, of our culture. And I'm sorry, I have to leave this debate right now, but I have to ask the madam before me. Madam,
would Nagaraju Lubna. if he was named an Ahmed or Ilyas? No. No, Lubna. So, a Nagaraju you're not would aware never about the have honor been killings, killed the if he was statistics? named an Ilyas or an Ahmed. The honor of the Muslim girl only lay in marrying, and I'm sorry, having relations with a Muslim man. That's the reality. And I'm sorry, you have also reflected your petty mindset just right now by comparing a brutal hatred crime to an honor killing. Reality is, all of these people who are opposing the fact So you're and not aware existence about of the Hindu statistics? phobia within You're our not country aware about the are living under a statistics? rock. They do not want to accept it because they're ashamed of themselves. See, you continue to be ashamed of yourself. You The are fact is, garnering- all of you have you actually are getting exposed your votes own fundamental because of this hatred for controversy Hindus and creating also your rampant and painting Islamic everything in mindset. That's Hindu what's and Muslim. happened. That is how have you a are getting rampant votes. Islamic So, fundamental mindset there is that no you point. harbor, There is that you don't absolutely even no recognize point. that you keep. Because you are It's getting okay votes for you. because of that It's only. okay. Hijab is okay. Ghungat is aggressive. You belong to that category. Hijab is said that? progressive You and can- Ghungat is you can come aggressive. with You Ghungat? belong to that Who has category, and I said that? congratulate You you can- for you such can talk a about myopic thought process and for such sorry state of mind. What are you Sorry, showing? What are you I showing, Ratan congratulate Sharda? you for having That is such a why sorry state you of will- mind. Wait, You are wait, the wait, reason wait. Painting it India as is Hindu never. Muslim issue. You are the reason India is never going to go ahead. India is never going to accept their own people. It is You are because the of people leaders we like should you. actually thoroughly No, be no, able Yes, to Ratan accept Sharda. the reality. I am showing Answer. Mr. Monojit Answer if Mandal. Nagaraju would have been killed if he was an Ahmed or an Ilyas. Just answer that. I'm showing Mr. Monojit Mandal Mamta's directive not to allow Shastra Puja, and still Hindus did Shastra Puja. He was saying that we love Shastra Puja. This is the proof of his Shastra Puja. Secondly, there are people who are talking about constitution. Ask the person who said constitution, why Sharia is above constitution, why triple talaq or object, why UCC is being objected. Thirdly, a Samajwadi person said that Hindus are tolerant, Hindu respect all religions. Fine. But there is a panelist here who had to apologize for saying Ganpati Bappa Moria. So it has to be give and take, sir. You cannot have secularism as one-way street. And more example of Hindu phobia. You and the likes of you. आपको दिखा दिया ना What are you न्यूज़. talking about? आपको न्यूज़ दिखाया ना. अरे सर, क्या दिखा दिया? Thirdly, more important. आप आइए for 7 अरे आपको न्यूज़ दिखाया. आपको न्यूज़ दिखा दिया ना. आपको न्यूज़ दिखा दिया. आपको न्यूज़ दिखा दिया ना. मैंने नहीं छापा न्यूज़. ममता दी वहाँ पर जब प्रसाद होते हैं ना, और खाना अरे आपको न्यूज़ दिखा दिया ना. अभी बात करने दीजिए. See, when any party gets majority, that's democracy. When BJP gets majority, it's majoritarianism. That is the difference. अरे चिल्लाना बंद करिए प्रोफेसर साहब, मुझे बोलने दीजिए. मैंने आपको न्यूज़ दिखा दिया, बोलने दीजिए. So when CA, ये posters in CA abusing Hindu dharma. Because what did CA have to do with Hindutva? What CA had to do with Hindu dharma? Nothing. But in Shaheen Bagh, posters are put up abusing Hindu dharma. So when BJP gets majority, it becomes majoritarianism. When Mamta gets majority, it is democracy. That is Hindu phobia. When Kashmir files press conference is denied. So basically you are saying, basically Waris, you are saying the argument is this, Rashmi. I don't think we've understood it well. My last point to Waris is, you see, Rashmi, what they are saying is that Hindus can never be any targeted. The Hindus can never be the subject of violence. Hindus are always the oppressors, persecutors. Hinduism is a religion which propagates Hindutva. Hindutva must be removed, and hence the Hindu way of life must be removed, and any references to Hindu pride should be removed. And if Hindus are the target, if Hindus are killed, they must not complain. If Hindu temples are destroyed, they must live with it. That, according to Waris Pathan, is true secularism in this country. Congratulations, Waris. Congratulations, Waris. So? No, congratulations, Waris, for the interpretation. I am talking about the constitution. I am talking about following the rule of law. I also condemn. Did they follow the rule of law in the Ratlam district? Did they all follow the rule of law in Khargone? Did they follow the rule of law in Jahangirpuri? Did they follow the rule of law in Kairana? Did they follow the rule of law in Jodhpur? But will the BJP, but will the
Will the BJP apologize for those so many mosques and Rashmi and dargahs which were discredited by them? Will they apologize? No, they will not do. But why a pattern? And another This you talk about Hindu. politicizing Hinduphobia is the worst way of whitewashing. All you're doing is trying to whitewash every Hindu temple that was demolished. Home Minister follows the religion of Hindus. फिर भी हिंदू खतरे में है. अरे I am laughing. I feel like laughing. फिर भी हिंदू Hindus are being pelted upon. Hindus are being pelted upon. मुसलमानों के घरों Hindus को believe in Vasudeva Kutumbakam, but still they're being pelted upon. It is the Hindus who are being stone pelted upon. It is the Hindus who are dying. It is the Hindus who are being attacked. It is the Hindus who are paying a price. It is the Hindus who are being lynched. You know, there are many Muslim celebrities who are married to Hindu women and they're happy. But when a Hindu man, a Dalit Hindu man decides to marry a Muslim woman, he's lynched to death. That is the reality of this country. And you're just trying to whitewash this by saying that Hindus are the oppressors. That's it. You're just proving and finally, I will say we need to be very careful, ladies and gentlemen, because Hinduphobia is not just peddled with tweet storms and by the lobby, ladies and gentlemen. There is a machinery in operation. There is a machinery in operation. There are foreign powers who are in the mix, and none of this is accidental, innocuous, or innocent. Ladies and gentlemen, Hinduphobia is not just peddled with tweet storms and by the lobby. There is a machinery in operation. There are foreign powers in the mix, and none of this is accidental, innocuous, or innocent. We must accept the reality of Hinduphobia if we are to do anything about it. And I shall see you on the next prime time. Good night and goodbye. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Isn't it political motivations of the Chief Minister, whether it's here, whether it's in Maharashtra, or whether it's the Mamata Banerjee government, isn't it time that these state governments realize they can't weaponize state machinery, something that you have told the court? What happened in our case, after all that, and then they realized that the police commissioner, who was the mastermind who gave the interviews against Arnab, he was running an extortion racket, the man's on the run. There are no real consequences. Unless we have to fix this system. If we don't fix this system, God be with it. The CBI conducted raids at 3 locations in Punjab after it was put on alert following a complaint by the Bank of Baroda. It carried out raids on properties of an AAP MLA named Jaswant Singh Gajjan Majra. The raids were carried out in 3 locations in the district of Sangrur over a bank fraud case involving transactions of up to 40 crore rupees. भाई ये तो निकलने इनमें से, मैं तो आगे ही आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से ही निकलने हैं सारे. तो ये कौन सी हैरानी वाली बात है? अभी तो काम शुरू ही हुआ है, पता नहीं क्या क्या निकलना. अभी तो भगवंत मान जी ने 2 दिन पहले ही बताया था. उन्होंने ऑलरेडी इसका थोड़ा सा ये बता ही दिया था कि बहुत जल्दी में कई कुछ आपको सामने आएगा, आ ही गया. The searches are being carried out in Sangrur and Malerkotla in connection with the case against the Amargarh MLA.
Sangrur happens to be the ancestral place of the MLA, indicating the presence of personal properties at the same. Bureau Report, Republic TV. I have just narrated that how our ancestors from the days of Maharaja Pithu to Lasit Borphukan, how we have prevented Assam from annexation and how we have prevented aggressors from capturing the holy land of Assam. So we had a long history of preventing Islamic aggressor. We defeated them 17 times. So today we recall their rich contribution, and we have also taken a vow to keep Assam the way the Top headlines at 1:30. Open defiance from the Ranas. Navneet says she will continue the struggle, won't back down. Navneet Rana challenges a Maharashtra Chief Minister to contest against her. Navneet Rana says she was ill-treated and faced mental torture while in prison. Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied to the gates of the Legislative Assembly. Political fight over Khalistan provocation. Kumar Vishwas hints AAP role in Khalistan provocation. Getting in breaking news from Chennai, the central government's Jimpur College in Puducherry, beg your pardon, the news coming in from Puducherry, which has the Jimpur College in relation to the central government's Jimpur College in Puducherry that has ordered only Hindi language will be used in the registers and files in the future. The order from the Jimpur College has also created a fresh controversy in the south. The DMK MP Kanimoi has also reacted to the controversy, saying that the union government is trying to impose Hindi in the southern states. We have Apurva joining us live from Chennai. Apurva, over to you. What more can you tell us? Well, Jipma College is one of the most prominent educational institutions here in Puducherry, and with this college now, the central order that has come in saying that Hindi must be compulsory use. The Hindi imposition row has yet again begun here. Remember, just a few weeks back, we had seen another case where following Union Home Minister, which has speech on using Hindi over English as a prominent language, as official language, had sparked a row. Following that as well, now yet again the Hindi imposition row has been picked up here. This even at a time when Jipma College, which is one of the most standard educational institutions here in Puducherry, comes under the Hindi imposition row. This taking to Twitter, Tamil Nadu's DMK MP Kanimori has tweeted out, voiced out her opinion, saying that this is yet again the centre's effort to try and impose Hindi on the southern languages and southern states as well. This comes at a time when we are seeing that not only in Tamil Nadu but also across several other states and constituents as well, we have seen where the Hindi imposition row has been a very sensitive subject that had taken place there. This also comes at a time when Puducherry is being led by NR Congress-led BJP government here, and with this institution that has received this kind of notice, not only are we seeing several voices from political field that is being risen on this circular that has come in, but also students as well. There remember, most of the students there are who are studying at the Jipma College are predominantly Tamil and other cultural speaking languages and not Hindi as such. And given that this is the situation there, it comes as quite a shock to most of the students there as well, those who are not well versed in Hindi language. Well, yes, Apurva, you know, the language row has erupted time and again, especially if we talk about the southern states and especially in Tamil Nadu. If you could just briefly take us through the timeline of events that have happened time and again in which DMK has claimed that Hindi is being imposed by the central government.
Well, we have seen just a few weeks back, we had also seen that the Hindi imposition law had been picked up here in Tamil Nadu as well as in Puducherry. We have seen where the language comments that had been made by Union Home Minister Amit Shah regarding Hindi over English as official language had sparked quite a controversy here. Several political parties, including the AIADMK and the BJP wing of Tamil Nadu itself, had issued a statement where they said that there will not be imposition of Hindi. No one will be forced to speak Hindi here in Tamil Nadu. And that is the same kind of sentiment that the BJP in Puducherry shared as well, especially led by NR Congress-led BJP government. And now with the statement that is coming in, yet again, this row has erupted time and again as we see imposition of Hindi being questioned by southern states for them as a threat, as in to lose their ethnicity. Yes, Apurva, we leave it at that. We'll keep coming back to you, and that is a Hindi row that has erupted yet again in the south. The DMK questioning the centre's move. Moving on then, the POJK refugees held a mega rally in Jammu in which thousands of the Pakistan-occupied Kashmir refugees took part in this and said that they want their land back and they also want to meet their relatives in the other end of the border. Here's a report. Three of POJK refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। पीओजेके का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे सर, आपसे जानना चाहूँगा लगातार मांग उठ रही है पीओजेके वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आएँ, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए, पूरे का पूरा वापस आना चाहिए। Getting you news in brief, President Ramnath Kovind inaugurated the permanent campus of Indian Institute of Management, Nagpur. Chairman and Board of Governors of IIM Nagpur, Shri Gurnani, also graced the occasion. The doors of Badrinath Dham opened amid the customary rituals and chanting of mantras ahead of the opening ceremony today. The senior officials of police had instructed the on-duty police personnel to be extra cautious. Remember, the shrine is one of the 4 ancient pilgrimage sites referred to as a Char Dham, which also include Yamunotri, Gangotri and the Kedarnath. The AIMIM chief OAC challenged Congress leader and Wayanad MP Rahul Gandhi to contest from Hyderabad, taking a jibe at Rahul Gandhi. He said that he will now lose from Wayanad too. On being asked about Rahul Gandhi's statement that he has come to Telangana to challenge the TRS and the BJP, as well as the AIMIM OAC challenged him to contest from Hyderabad as well as Medak. According to police, an encounter broke out between the security forces and terrorists in Devsar area of Jammu and Kashmir's Kulgam. The police and army are on the job. In a veiled attack on the Aam Aadmi Party-led Punjab government, BJP leader RP Singh alleged that the Punjab police arrested BJP leader Tajinder Bagga out of political vendetta. BJP leader Tejasvi Surya announced that Punjab High Court, in a midnight hearing, directed the state police not to take any coercive action against Bagga until the next state of hearing. Now, the Ranas have once again given an open challenge to the Maharashtra government, saying that they will not back down and will continue with their struggle. Listen in to what Navneet Rana had to say just a short while back. We will play out that soundbite as well of MP Navneet Rana. But yes, those are the visuals as well on your screens where Navneet Rana, she has been discharged from the Leela
Pati Hospital. In fact, just addressing the media, she said that she will continue her struggle and will not be suppressed. Listen in. और नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13 ये सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी हिंदी में और महाराष्ट्र के ऊपर जो एक महिला की तो उसके ऊपर सभी को अफसोस मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी, पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेके जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है तो शी शुड गेट चेक। 27 से लेकर 4 तारीख मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया है। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज लेना। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ठाकरे जी को भी बोलना चाहूँगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी दूंगी। आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपके मैडम मराठीत बोला मैडम ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या लॉकअप में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिया उस पर हमारा पूरा विश्वास था। 10 तारीख को जो अयोध्या के पोस्टर लगे हैं उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम असली है कि नकली है। बाला साहब असली थे,
जो 10 तारीख को जा रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व को गांड रखा है, हिंदुत्व को भूल गए हैं। वो नकली लोग अयोध्या जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम असली है। तो जब पोस्टर लगाने की बारी इन पे आ रही है तो समझ जाओ आने वाले परेड में हिंदू उनको जगह दिखाने वाले। जिस तरह से कार्रवाई हुई तो क्या कहेंगे? आज 5 तारीख को भैखला जेल से आई थी और यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से कार्रवाई हुई इस पर क्या कहेंगे? कौन सी कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जो कार्रवाई दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक महिला को शिवसेना डर चुकी है, राज्य सरकार डर चुकी है, उद्धव ठाकरे डर चुके हैं। और एक महिला पे इतना अत्याचार महाराष्ट्र में अगर होता है मुख्यमंत्री के माध्यम से, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। और आने वाले समय में हनुमान भक्त और राम भक्त उनको जगह बताएंगे। और उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या दिल्ली में जा रहे हैं आप? दिल्ली जाने वाला हूँ और दिल्ली को न्याय मांगने वाला हूँ। वहाँ गृह मंत्रालय है, PM साहब है, जो डिपार्टमेंट में शिवसेना के माध्यम से जो इंक्वायरी शुरू है वो जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए। और अनिल परब आणि संजय राउत या दोघंही जेलाच्या आतमध्ये गेले। BMC नोटिस ये एक दुश्मनी निकाल रहे उद्धव जी। और उद्धव ठाकरे CM होते हुए अगर पद का दुरुपयोग करते हैं, मुझे लगता है जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई उसको मान्यता मुंबई महानगर पालिका ने दी है, उद्धव ठाकरे जी के महापौर ने दी है। अगर कुछ गलत है तो उन्होंने आके चेक करना चाहिए। पूरी बिल्डिंग उनके नज़र के सामने है और मुझे लगता है ये द्वेष और खुन्नस की राजनीति है, ये महाराष्ट्र और देश की जनता जान रही है। नवनीत काफी परेशान है, नेक्स्ट मूव क्या होगा? अगर आप हम लड़ेंगे, हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय ने पहले ही कहा है राजद्रोह का गुना गलत है, गलत तरीके से इन पे ऑफेंस दाखिल किया है, 14 दिन जेल में रखा गया है। और न्यायालय पे हम लड़ेंगे, न्यायालय के माध्यम से जिन्होंने गलत हमारे ऑफेंस दाखिल किया उन पे कार्रवाई करेंगे। जब न्यायालय ने बताया गलत तरीका है, गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल हुआ है और ये बनता ही नहीं है, तो मुझे लगता है न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हम वापस न्यायालय में न्याय मांगेंगे, जिन्होंने गलत किया उन पे कार्रवाई करेंगे। नवनीत जी काफी परेशान है। जो हाई कोर्ट में गया था वो स्क्वॉश हो गया है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? मैं बोल रहा न्यायालय में न्याय मांगेंगे। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी राज्य को चलाया, राज्य को आगे बढ़ाया। और उद्धव ठाकरे ने गड्ढे में डालने का राज्य को काम किया है। सिर्फ देश वाली राजनीति और घर में बैठ के उद्धव ठाकरे जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है जनता के बीच जाके उसने काम करना चाहिए। नवनीत जी काफी परेशान है, देख रहा हूँ, और इतना दिन रहना पड़ा हॉस्पिटल में। दिल्ली में क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली में आप बोल रहे हैं जाएंगे, PM से मिलेंगे, HM से मिलेंगे। न्याय मांगेंगे, जो हमारे पे अत्याचार हुआ, जो हमारे पे अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और वहाँ पे दिल्ली में न्याय मांगेंगे। महाराष्ट्र में पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में, यहाँ सच को न्याय नहीं मिलता है, झूठ को न्याय मिलता है। On then, an encounter is currently underway in Kulgam where 2 terrorists are trapped by the forces, including 1 Pakistani terrorist. Here's a full report. In an anti-terror operation carried by SOG Kulgam along with Indian Army in Chian village of Kulgam, South Kashmir, 2 terrorists are trapped, and as per IGP Kashmir Vijay Kumar, the one of the terrorists is Pakistani terrorist who's been identified as Haider, who's been active in North Kashmir for 2 years but now has shifted his base to South Kashmir. He's been trapped along with local terrorists. As far as Haider is concerned, he's involved in number of terror crimes, but yes, the exchange of fire between the terrorists and the security forces started somewhere around 3 in the morning, and since then the gunfight is on. As of now, no terrorists have been killed, but meanwhile we are also seeing the focus in South Kashmir visit. It is a visit of LG Manoj Sinha to South Kashmir's Anantnag today, or for that matter the preparations related to Amarnath Yatra, because this is going to be the first Yatra post abrogation of Article 370. With VJ Firdoswani, I'm Zeenat Zishan Fazil for Republic in Srinagar. Now, tracking another big story coming from Himachal Pradesh, Republic now has accessed this video from Dharamshala where Khalistani flags were seen tied to the gates of Himachal Pradesh Assembly. In fact, in another development, Himachal Chief Minister has tweeted on the Khalistani provocation. He has said, and I quote, "I condemn the cowardly incident of raising Khalistan flags at the gate of the Dharamshala Assembly complex in the dark of night. There is only winter session in the Assembly, so there is a need for more security arrangements here as well.
well. So that's a statement coming in from the Chief Minister of Himachal Pradesh. In fact, we have some reactions as well coming in, as well as the soundbite of the Himachal Chief Minister. दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है, ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ज़्यादा सख्त हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा है सर, वहां पर सर खालिस्तानी झंडे लहराए गए। क्या लगता है कि इस तरीके का धार्मिक उन्माद भारत में लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुछ साजिशी सुपारी के सूरमा हमारे देश की एकता, हमारे देश के सौहार्द को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें हमारे देश के लोग ही कभी सफल नहीं होने देते और इस बार भी सफल नहीं होगा। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार से भी जो हमारा भाईचारा है, प्रेम है, देशभक्ति है, नेशनलिज्म है, सोशल जो ताना बाना है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। And here's a quick roundup from across the globe. Mexican president arrived in Cuba for meetings with his Cuban counterpart and other high-ranking officials. President and Mexico's first lady arrived at the airport in Havana, where they were received by Cuban foreign minister. The Mexican president, remember, recently criticized the U.S. embargo against Cuba and the decision not to invite Cuba to the summit of the Americas that will take part in Los Angeles this year. Relatives and rescuers continued to search for the victims of an explosion at one of Havana's most luxurious hotels, which killed at least 26 people and injured some 80 others. More than a day after the explosion rocked the hotel, fire brigades, rescuers, paramedics and heavy machinery technicians continued to remove debris where they found another victim that was presumed to be dead. Relatives and rescuers continue to search. In more news coming in, John Lee arrived at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre ahead of his expected appointment as the next chief executive. Lee was formerly the city's number 2 official. Well over half of the 1,500-member election committee that selects a chief executive has already endorsed him, and he needs only one simple majority to win. US tourists have died at 3 US tourists died at a resort in the Bahamas after falling ill, and another was airlifted to a hospital for the treatment in Bahamas. Acting Prime Minister Chester Cooper issued a statement saying that police are investigating and the cause of death is still unknown in this incident that happened in Bahamas. Protesters took to the streets of Lima in another day of demonstrations against the government of Pedro Castillo. They expressed their discontent with various policies of the Peruvian president, who has been in power for only 9 months, alleging corruption and government mismanagement.
Now, as Russia's military offensive continues in Ukraine, Republic gets you this ground report from the second largest city of Ukraine, Kharkiv. Republic TV has been showing you since the beginning of the war, has been showing you the visuals of each and every region in Ukraine, how it has been destroyed by Russia forces. Importantly, the Kharkiv, which is known to be the Ukraine's second largest city, is been majorly hit of Russia invasion. For more on this, we have been joined by Territorial Defense of Kharkiv. So thank you to speaking to Republic. So Kharkiv has been known to be the majorly been targeted by Russia invasion and Russia forces. We saw many construction that has been destructed now. What is the current situation, if you can just tell us? Можете описать текущую ситуацию в Харькове? Харьков, известно, что это очень тяжело поврежденный город и ситуация тяжелая. Да, действительно, Харьков очень сильно за время военных действий был обстрелян войсками Российской Федерации. Очень пострадал многие районы города, это центральные районы города и также районы Салтовки, а в частности это Северная Салтовка. Были очень большие обстрелы, много домов пострадало. И на сегодня на самом деле немножко пошло уже такое более спокойная ситуация, обстрелов становится все меньше с каждым днем. Yes, it is true that the city was heavily damaged. Some districts are really strongly damaged, central areas as well, but mostly Saltovka and North Saltovka region of Kharkiv. But the bombardment is getting less. It's decreasing by now, and it's done by Russian forces. Is the people who have been staying, because it has been known that half of the population has already been escaped, and most of the people we saw that they have been staying at metro stations, which is a really hard life for them. But of course, it's a very big challenging for you as well, because the people who are going to come back to Kharkiv, how safe it will be, because we saw that army in every position be going to each and every place, making the surety the people should stay safe. Ну, я вам скажу так, что выехало больше, чем половина населения города. Очень много людей выехало, особенно в первые дни, когда были массированные обстрелы. Сейчас люди начинают немножко возвращаться обратно. Ситуация более-менее начинается быть спокойной в связи с тем, что меньше обстрелов, но все равно напряженная остается. Что до нахождения людей в метрополитене, да, действительно, там прятались от обстрелов много людей, и до сих пор еще остаются там люди, но потихонечку возвращаются в дома. Actually, more than a half of the population of Kharkiv left the city during the first days of bombardment, but currently the tendency is that people are coming back slowly. The situation is still tense. It is true that people are staying in the subway for safety from the bombardment, but the city is slowly returning to the normal life. It's still not safe and tense, but it's getting better. Slipping to a very short break, on the other side, politics over Gyan Vapi continues even as the court orders to continue the survey. Open defiance from the Ranas, Navneet says that she will continue to struggle, dares Chief Minister Thackeray to fight against her. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. The world over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god, nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for, suicide bombing after sloganeering Jai Sri Ram or Jai Siya Ram. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hindu phobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience, and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hindu phobia.
When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the gun like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. Unless and until Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them. When Nagaraju was killed for being a Hindu, all his party's top leaders are in Hyderabad. Which one of them, Ratan Sharda, please ask him, which one of them had a protest march? That is Hindu phobia. My message to all the people of Ukraine is that WHO stands with you. We will do everything we can to support the government in its efforts to treat the injured, maintain health services, and to repair and strengthen Ukraine's health systems. But there is one medicine that WHO cannot deliver, and which Ukraine needs more than any other, and that is peace. So we continue to call on the Russian Federation to stop this war. WHO has now verified 200 attacks on healthcare in Ukraine since the war began. These attacks must stop. Healthcare is never a target. In my career, it's first time this situation. Not the first time. First time was in 2014 when the war started in Ukraine. We moved from Donetsk and moved to Kiev, Shakhtar Donetsk, I mean. But the championship we play, we have games. But now the first time this situation when we have the war in all countries and don't have possibility to play championship, don't have possibility to play other sports in Ukraine. That's why कर दिया गया ये गेट, ये देखिए साफ लग रहा है, शाखा में लड़के लोग जो एक्सरसाइज और आरएसएस की शाखा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फोटो है कि क्योंकि देखिए ये तस्वीर आपको साफ तौर पर नजर आएगी, यहाँ आरएसएस की शाखा जो है चल रही है और ये मंदिर का प्रवेश, जो सर बता रहे हैं कि ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, आखिरी 2 फोटोज बची हैं, इसके बारे में मैं समझूंगी। सर ये तस्वीर कुछ ताजा सी लग रही है, ये तस्वीर कब की? ये पश्चिम पूर्वी भाग की है। ये स्पष्ट दिखे मस्जिद का, ये पूरा, ये केवल हल्का सा ये जो मंदिर का है। आगे जो जितने भी सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मस्जिद का हिस्सा है, नवनिर्मित हुआ है ना। ये मंदिर पर तामीर किया गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है मंदिर का हिस्सा है जिसके ऊपर ये मस्जिद का जो है निर्माण कराया गया। हाँ, और ये भी ठीक इसी तरह ये मंदिर का है। ये जितने भी सफ़ेद हैं और ये सब मस्जिद का है। हिस्सा नजर आ रहा है, ये मंदिर का हिस्सा है। हाँ, ये मंदिर का है। स्पष्ट नजर आता है कि जो सफेद है वह मस्जिद का है और ये सब मंदिर का है। अब ये हिस्से नजर आते हैं। ऐसे ही एकदम कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल भी हम जो है वादी होने, मतलब कल भी हम जो है वादी जो है पैरोकार होने के कारण जो है एक वादी नहीं गया तो उसके स्थान पर हम गए थे। तो पूरा का पूरा देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, 0.001% भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो हिस्सा आप बता रहे हैं ये किस तरफ पड़ता है? क्या यहाँ पे पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर। वीडियोग्राफी हो चुकी है? हाँ, नहीं हुआ, वो जाली से होगी, बैरिकेटिंग के अंदर से हुई है। ये बैरिकेटिंग के अंदर की जगह? हाँ, बैरिकेटिंग के अंदर से हुई है। जब हम लोग प्रवेश करेंगे मस्जिद में तो एकदम बिल्कुल अलग। और तो आपको 1996 में हम इसकी बैरिकेटिंग की, इसकी पैमाइश किए हैं, इसकी फोटोग्राफी किए थे। सर एक बात समझाइएगा जरा डिटेल में, ये जो आप बता रहे हैं ये बैरिकेटिंग के अंदर का हिस्सा है। जब आप बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे तब आपको ऐसा नजर आएगा कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद की नहीं। हाँ, ये लेकिन 1996 में जो 95 का हमारा वाद दाखिल था उस समय हम यहाँ तक पहुँचे, इन दीवारों को छुए थे हम जो है उस समय। हाँ, अब यहाँ पर पूरे बैरिकेटिंग कर, हाँ, उसके आगे 10 इस दीवार के 10 फीट आगे बैरिकेटिंग की गई है। क्या ये सब चीजें जो है दिखाई नहीं देती दूर? वो जाली लगा दी, पतली जाली लगा दी है ना, पतली जाली लगा दिए हैं, पतली जाली लगा दी है कि जिसकी वजह से दिखाई नहीं देती। अब मुझे एक और चीज, आखिरी मेरा सवाल ये है, ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये पूरा जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये सारी तस्वीरें आप लोग कोर्ट के सामने भी पेश करेंगे? हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल पेश करेंगे।
सत्य मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, सब का सब एकदम है। और माननीय न्यायालय वो जो वकील कमिश्नर या कोई भी देखे, सब का सब एकदम साक्षात एकदम 100% हूबहू मिलेगा और मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको ये पता ही नहीं था या उनको आभास ही नहीं था कि ऐसा कमीशन आएगा जो कि बिल्कुल बारीकियों से अध्ययन करेगा। और तो और हम लोग चूंकि बगल में ही रहते हैं, हर पल गिद्ध की दृष्टि से लगाए रहते हैं कि हमारा आराध्य स्थल है, देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति का मंदिर है, उनकी रक्षा का दायित्व तो हम लोग का है। और साथ ही हम आपके चैनल को बार बार प्रणाम करते हैं, हम आपके फैन भी आपके चैनल के हैं, आपको साधुवाद देते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए इन तस्वीरों के मायने आपने समझा, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस हैं जो कोर्ट के सामने जो है रखे जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर कितने साल में, कौन से साल में जो है उन्होंने ये वहाँ पर मंदिर था, कौन से साल में वहाँ पर मस्जिद जो है बनाई गई। हालांकि कोर्ट इन पर क्या कुछ कहता है इसके लिए इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट भीष्म के साथ अनुपमा झा, वाराणसी। Well, we have Madhurima as well joining us live from Varanasi, I'm told. Madhurima, of course, a huge face-off that has erupted over the whole issue, you know. If you could take us through the details of this case and the arguments that have been put forth by the lawyers, because if I'm not wrong, the lawyers what essentially have said that there was a deity, that there were Hindu deities that were there at the same spot where the committee, the caretaker committee has raised strong objections to. Well, absolutely. It's a very crucial argument that was put up by the defense over here the prosecution over here. We'll take you straight to the pictures over here. As you can see that we are reporting from the gate number 4 of the Kashi Vishwanath Mandir. And right adjacent to it is the mosque. My video journalist Mahinder Singh is showing you the live visuals of here. This is the controversial site and we are reporting live from there. And as you asked as to what would be the arguments will be based on the evidence that has been collected. However, we know that yesterday was a controversial day where a lot of ruckus was created at this particular single point, and the team which had come for the videographic survey was not allowed to go inside and do its job as it was asked by the court. However, the claims that are being made in the petition are that where this particular mosque stands, there used to be a Gauri Shringar temple over here, and the petitioners have been claiming time and again that they need permission to go inside the mosque and worship the Gauri Shringar temple that remains over here, because the situation has been very tensed ever since the Babri Masjid case, the Ram Janmabhoomi case was going on. Ever since then, the entire security was beefed up over here, and ever since then they were not allowed to go inside the temple and worship the deity over here, leaving the Chaitra Navratri season. Now the petition asks that the permission should be given, that the devotees should be allowed to go at this particular spot and offer obeisance to the deity as they were allowed to do earlier as well. However, the larger picture which really revolves around this particular mosque and the Kashi corridor is that the petitioners ever since 1991, when the first petition was filed, have been claiming that it was Aurangzeb who in the 17th century had demolished a portion of the temple and had built this particular mosque, and there lies a very significant part of the Hindu goddess Gauri, and which is why they want that this particular structure should be removed from here, and the real structure which is over 2000 years old should be allowed to be reconstructed, and the deity should be allowed to come and worship over here. We'll have to wait and watch as to how will the court react to it, because the petitioners have said that they need a different court commissioner under which the entire survey would be done if at all it is allowed. So the court would be hearing, the district court over here would be hearing both the sides as to determine and to gain some evidence and perspective of this particular structure, because archaeological evidence is very important and is needed so as to determine if there is any relevance in the first place as to what the petition claims.
Back to you. Well, that's right, Madhurima. And look at the kind of arguments that have been made, the statements that have been made by the AIMIM chief, who has said that the whole survey is a violation of SC Worship Act of 1991, drawing a parallel to the Babri Masjid demolition as well, and going on to add that the law, the SC Worship Act of 1991 prohibits conversion of religious places. Well, let me tell you that according to the petitioners over here, that initially when archaeological survey was asked over here and this particular act was given, the petitioner here and the previous petitioner have also been claiming the fact that if the archaeological evidence suggests that a Gauri temple was removed at first place and the mosque was built over here, then this particular act does not apply, because this was first a Hindu religious place, then it was demolished and brought back here. This is the claim that the petitioners are making. So it's a very strong statement that has been put forth by the petitioners, which counters the very fact that Mr. Owaisi has been highlighting. We'll have to wait and watch as to see how court reacts to this particular argument that has been kept forth by the petitioners over here. It will be tomorrow. Tomorrow the court proceedings will begin here in the district court in Varanasi. We'll have to see as to how this entire argument goes on, because both sides are presenting their sides very strongly. They both have archaeological evidences, but a detailed videographic survey would be needed, as it was suggested by the court, though we will have to see if, like the petitioners over here have questioned that the court commissioner who will come here should be changed, and the entire modus operandi is also questionable. We'll have to see what observations as the court makes, because this is an issue that has been revolving around ever since 1991 and has gained momentum in the recent past. All right. So, Madhurima, thanks for getting us all those details. So, Madhurima, they're reporting live from the Gyanvapi Mosque site. We have some reactions as well on the same story. Let's listen in. ओवैसी के मंसूबों को समझने की ज़रूरत है। और ओवैसी जो है देश के अंदर क्या नाम है उत्पात मचाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करना चाहते हैं और वो जिन्ना बनने का स्वप्न देख रहे हैं। और ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए और तत्काल जेल में डालना चाहिए। और जहाँ तक ज्ञानवापी के सर्वेक्षण की बात है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कोर्ट कचहरी जाने के लिए स्वतंत्र है। और फिर जब निचली अदालत ने क्या नाम है उन्होंने जब चैलेंज किया मुस्लिम पक्ष ने जाकर के ऊपर की अदालत में, तो उन्होंने जब खारिज कर दिया तो कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जो याचिका। और दूसरी बात यह है कि वो किस बात से शंकित है, किस बात से भय है कि जो सच, कौन सा सच है जो वो उजागर नहीं होना देना चाहते हैं। उन्हें जो है कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो मामला अदालत के विचाराधीन है, उस पर दोनों पक्ष के तथ्यों के बाद अदालत फैसला देगा। उसके पहले कोई अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की हालत अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एक पर कटे पक्षी की तरह है। महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, अच्छे दिन पर लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन बलपूर्वक कब्जा कर रखा उस मुद्दे पर लड़ नहीं सकते। तो ये ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा मिले जिसे ये राजनीतिक रंग दे सके। ज्ञानव्यापी और काशी में एक अच्छी बात है कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन के लिए मंदिर सुलभ है, ज्ञानव्यापी में भी लोग इबादत के लिए जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की असफल कोशिश कर रही। मुझे पूरा विश्वास है काशी की जनता इसे नकार देगी।
खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। News in brief, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said that the state government will ensure that the state becomes the top destination for the foreign and national investors. Bommai said that the government is quietly working on various sectors which can attract investors in a big way. The sectors include IT, electronics, semiconductors and electric vehicles. The BJP National President JP Nadda asked the Delhi unit of the party to step up attack on the Aam Aadmi Party. Nadda was briefed after the Punjab police action against the Delhi BJP leader Tajinder Bagga. The BJP chief also asked the Delhi leaders to highlight the shortcomings of the Delhi government. Punjab and Haryana High Court directed late night that the Punjab police cannot take any coercive action against the Delhi BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga till the next hearing on May 10th in a respite against the arrest warrant issued by Mohali Court last evening. The High Court order came as a relief for Bagga, who may not have been taken in the custody by the Punjab police till May 10th. Hours after Delhi BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga got relief from the Punjab police after midnight Punjab and Haryana High Court hearing, his father slammed the Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal, saying that he's scared of his son. Bagga's father also claimed that Kejriwal tried to persuade Tajinder to join the Aam Aadmi Party. India reported a slight decline in COVID cases, with the country reporting 3,451 new cases in a day, pushing the active tally to above 20,600 mark. The Health Ministry said that the active cases now constitute 0.5% of the total infections, adding that the country's COVID-19 recovery rate is above 98%. Now, in one of the harshest restrictions on women since the Taliban overthrew the government in Afghanistan, the hardline leadership has sent shockwaves with an order making it mandatory to wear a head cover. That's the diktat by the Taliban, and now the United Nations has called out the Taliban for its latest diktat. Latest in series of repressive diktats. Now Afghanistan's Taliban rulers have ordered all Afghan women to wear head-to-toe clothing in public. A sharp, hard-lined pivot that human rights activists fear would further complicate Taliban's dealings with an already distrustful international community. That women should leave home only when necessary, and male relatives would face punishment, starting with the summon and escalating up to court hearings and jail time for women's dress code violations. Taking note of this, UN chief raised alarms over the development and urged the group to keep their promises to Afghan women and girls and their obligations under the international human rights law. The latest repressive edicts issued by Taliban contradicts the numerous assurances regarding respect and protection of human rights, including those of women and girls, that Taliban promised after their takeover to the international community. Agency report, Republic TV. And time to slip into a very short break, viewers. Don't go anywhere. We have a lot lined up for you on the other side. Open defiance by the Ranas. Navneet Rana says she will continue her struggle and won't back down. And Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied on the gates of the Legislative Assembly. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. I am not saying Muslims are carrying out violence, I am saying some Muslims are. But what I am saying to you is, at least this much honesty to say Hindus are being attacked.
we are being selective on cases. We are selectively talking about one person. We are not talking about the 8 girls getting raped in Uttar Pradesh in just one day. They are Hindu. We are not talking about that. It's easy to be cynical and commenting on political affairs by making these ridiculous comments. But what is going to get them is fine. They'll get some talis out there from their own community. But I'm sorry, if these kind of populist agendas are going to overturn a national good, then they've got to rethink about what their politics is all about. A month after Russia withdrew from Kyiv, life appears to return to a form of normality. Whilst many fled towards the west of the country during the early days of the invasion, many Kyiv businesses closed as both clients and staff left. Igor Abramenko, owner of OG Burger, said he never imagined he would have to leave. Difficulties with the gasoline, obviously, and but besides that, with some products we use more or less okay. The metro, they working properly. Coca-Cola still on market, in the market, not like in Russia, by the way. And I mean, I feel like we operate it as normal. A little bit harder because of gasoline, yes, but otherwise all okay. But as the war started and friends and family urged him to leave, actually this war is they reunite all of us Ukrainians. I wasn't feel like 100% Ukrainian before the war. It's strange things happening now, and now I want to talk in Ukrainian language. I start learning Ukrainian, and I feel like I'm 100% belong here. My land, my people, air, and everything here is comfortable with me, and I am comfortable with all of it. As soon as Russian forces withdrew from the Kyiv region, along with him, many businesses returned. Many Ukrainians are of the view that the faster the economy gets back, better it is for the people who would go back to work and be able to help more with the war effort. Agency Report, Republic TV. यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है वो पहुंचा था अजान पढ़ने के लिए। पुलिस की तरफ ने समझाने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, लेकिन जैसे ही कुछ लोग यहाँ से वापस जाने लगे, वहाँ पर नारेबाजी जो है शुरू हो गई। लगातार माइक से जो है इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग जो है यहाँ से हट जाएं, किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। World over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned. को आप खुद बताएं। देखिए, मैं रात को उस दिन 3-3:30 बजे घर आया था, इसलिए मैं सो रहा था। 2 लोग घर के अंदर आए, एक वर्दी के अंदर थे, एक सिविल के अंदर। मेरे पिताजी से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि मर्दा का है, तो मैं अंदर उस समय आवाज सुन गया, तो मैं बाहर आया तो देखा कि एक पुलिसकर्मी और साथ में वर्दी के अंदर थे, और आगे जब नोटिस से नहीं, यही एक पुलिसकर्मी आए। तो मैंने उनसे पूछा कि नोटिस से आए, उन्होंने कहा हाँ। तो मैं साथ में बैठ गया, उनको पानी वानी भी पिलाया, सब कुछ हम बातचीत कर रहे थे। तो साथ में जो उनके एक पुलिसकर्मी थे, मुझे पहले लगा वो दिल्ली पुलिस के, क्योंकि पहले भी 1-2 बार आए तो दिल्ली पुलिस के इन्फॉर्म, क्योंकि जब भी पंजाब पुलिस आते दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना था, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही साथ में आता है, तो मुझे लगा वो दिल्ली पुलिसकर्मी है। तो उम्र से ऐसे दिल्ली पुलिस का ही अफसर बनके मेरे से बात कर रहा था। लेकिन हुआ ऐसा कि जब 2-3 मिनट हम बात कर रहे थे, तो वो अचानक उठा जो सिविल के अंदर था, और उससे जाके दरवाजा खोला, और मैं बिल्कुल साथ वाले, अगर आपके पास वो वीडियो भी होगा जो पुलिस ने जब मुझे पिक किया, मैंने उस समय पटका या पगड़ी कुछ नहीं बांधा हुआ था, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला 14-15 लोग अंदर आ गए सिविल के अंदर। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं बताया, मेरा फोन छीन लिया। मेरे पिता अंदर से आए और उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, उनका भी फोन छीन लिया। और जब मैंने उसका विरोध किया, क्योंकि मतलब आप अचानक कैसे बिना वारंट दिखाए, बिना बातचीत किए, क्यों आप लेने आए हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं बताया, तो मैंने उसका विरोध किया, तो मेरे और पिता के साथ मारपीट की।
और मेरे को हम दोनों के फोन आज भी पंजाब पुलिस की कस्टडी के अंदर है। मेरे को 7-8 लोग जैसे किसी आतंकवादी को उठाया जाता है वैसे उठा के लेके गए। अगर आप उस लास्ट वीडियो को देखेंगे जब मेरे को पकड़ रहे हैं, कॉलर से पकड़ रहे हैं, मैंने उस समय पटका या पगड़ी नहीं बांधा हुआ, जबकि सिख रहत मर्यादा के अंदर है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अपना सिर कजना होता है, चाहे वो पगड़ी बांधी हो या नीचे छोटा पटका जो होता है वो बांधा, मतलब सिर को नंगे सिर बाहर नहीं जाती, सिख रहत मर्यादा के अंदर है हमारे। तो मैंने उनको बोला आप मुझे पटका बांध लेने दीजिए। शायद अगर वो वीडियो पंजाब पुलिस ने ही जारी किया है जो घर वाला, उसके अंदर हाँ इसके अंदर आप देखेंगे तो मेरा सिर में मैंने पटका या पगड़ी नहीं बांधी हुई। तो अगर इसका ऑडियो हो बीच में तो आपको वो ऑडियो चलाना चाहिए। उसके अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे पटका बांधने दीजिए, मुझे पगड़ी बांधने दीजिए। बेशक वही वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। ब्लू कलर की ड्रेस के अंदर है, उसने भी कहा इन पुलिस अफसर को क्योंकि पटका बांध लेने दो, तो पुलिस अफसर कहते आप इसको पंजाब पहुंच के ही पटका पहनाएंगे। फिर जब मुझे गाड़ी में डाल दिया गया तो मैंने इनको बोला आपने गलत किया है, आपने मुझे पगड़ी या पटका नहीं बांधने दिया, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। तो फिर उनका जो अफसर एक आगे बैठा हुआ था जो गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि देखो पीछे कोई पगड़ी पड़ी होगी इसको दे दो। तो उसने मुझे एक ब्लू कलर का कपड़ा दिया और मैंने फिर गाड़ी में जब लगभग हम दिल्ली बॉर्डर के पास, तब मैंने उसको वो बांधा और उसी को मैंने फिर फाड़ के एक पटका बना के अपने सिर पे बांधा। भगत साहब, जब आपको पुलिस लेकर गई थी दिल्ली से लेकर आपको पंजाब लेकर जाया जा रहा था, वहां हरियाणा पुलिस ने रोका भी था। क्या आवाज चली गई है? एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। समझना ये चाहूंगी आपसे कि जब आपको जब पुलिस लेके जा रहे थे, हरियाणा पुलिस ने रोका था, उस वक्त जो तीनों राज्यों की पुलिस थे उनके बीच क्या बातचीत हुई थी, आपको लेके क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी लेकिन कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था उस दौरान। आवाज पहुंच रही है अब तक तेजेंद्र जी? संपर्क हमारा कट गया, हम वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाजिया लगातार जिस तरह से वो बता रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेशक अनामिका, और एक बार फिर से हमारे साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा जुड़ चुके हैं। तजिंदर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस समय आपके घर पर पंजाब पुलिस पहुंची, उसके बाद से आपने आरोप लगाए हैं कि आपको आतंकियों की तरह लेकर जाया गया, 50 पुलिस वाले पहुंचे थे, आपने आरोप यह भी लगाया है कि आपके पिता के साथ भी मारपीट की गई है। हम चाहेंगे कि आप पूरा घटनाक्रम बताएं, उसके बाद से आपको किस तरीके से कुरुक्षेत्र तक ले जाया गया, वहां पर हरियाणा पुलिस ने आपको रोका। हम चाहेंगे कि डिटेल में आप दर्शकों को बताएं जरा कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, जब मेरे को गाड़ी में डाला गया, गाड़ी में उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जो मारपीट मेरे साथ हुई घर के अंदर हुई, गाड़ी में, क्योंकि इनका ऑर्डर था कि जितना भी कवरेज है रास्ते का, शायद मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, किसका ऑर्डर था मुझे नहीं पता, उसको लाइव दिखाना है। तो उसको वो लाइव दिखा रहे थे, इसलिए रास्ते में तो उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। जो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जो की वो घर के अंदर की, और जो मेरे घर से गाड़ी तक ले जाने का जो कॉरिडोर है बीच का, उसके अंदर की। जी नहीं, वहां जब पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने रोका, उस दौरान भी क्या तीनों राज्यों की पुलिस के बीच कोई बातचीत हुई थी आपको लेके, कोई उनके बीच खींचतान? हरियाणा पुलिस ने उनको रोका और उनसे ये पूछा कि हमें दिल्ली पुलिस की शिकायत है कि आपने लोकल थाने में इन्फॉर्म नहीं किया है, क्या आपने वहां जो डीडी एंट्री होती है वो कराई है, क्या उसकी आप हमें एक कॉपी दे सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्लेन है, क्या आपने वहां मेडिकल कराया है, क्या आपने लोकल एमएम के सामने पेश किया है, क्या वहां आपने किसी वकील से बात करने का मौका दिया है? तो वो कुछ भी नहीं दिखा सके, इसलिए पंजाब पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। उनके पास वारंट तक नहीं था। आप सोचिए, ये जो वारंट है ये कल दोपहर को इश्यू हुआ। अगर वारंट पहले इश्यू होता मेरे खिलाफ तो क्या 2 दिन पहले पंजाब पुलिस उसको दिखाने देती वारंट को? मतलब अरेस्ट करने पहले आए और वारंट कल इश्यू हो रहा है। जी, आप खुद सोचिए ना, जो वारंट आया मोहाली कोर्ट का कल आया और अरेस्ट करने कब आए? 2 दिन पहले। तो उनके पास तो वारंट तक नहीं था अरेस्ट करने का। बेशक। तजिंदर जी, आप सोशल मीडिया साइट्स पर, खास करके ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक आपका ट्वीट मुद्दा बना है, आखिर उस ट्वीट में क्या था, क्या लिखा गया था जिसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, विवाद हो गया, आपकी गिरफ्तारी तक करने पहुंच गए? ऐसा क्या था उस ट्वीट में? देखिए, मैं आपको बताता हूं, तो मेरे खिलाफ एफआईआर हुई। अगर आपके पास वो एफआईआर की कॉपी है तो उस एफआईआर की कॉपी को आप पढ़िए कि उस एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दिया और ये कहा है मैं केजरीवाल को जीने नहीं दूंगा, इससे पंजाब में दंगे फैल सकते हैं, इसलिए तजिंदर बग्गा पे एफआईआर की। पहले तो मैं मानता हूं, 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं ये आरोप सच है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो पंजाब में दंगे कैसे फैल सकते हैं, इससे ये बताइए। दूसरी बात अब मैं बताता हूं, मैं टीवी चैनल के ऊपर था,
मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था कश्मीर फाइल्स पे ऊपर, जो उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ वो झूठा था, ये कहानी झूठी है, तो मैंने उनसे कहा माफी मांगिए। मैंने उनको कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते, केजरीवाल जी को हम जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए माफी नहीं मांगते। अब ये तो आम बातचीत की भाषा है कि जब तक मेरा ये काम नहीं करेगा मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अगर मैं आपको बोलूं, अरविंद केजरीवाल को बोलूं कि केजरीवाल जी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो क्या मेरे पे एफआईआर का, वो तो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। तो मैं मतलब ये तो किस भावना के साथ। और मैं आपको बताता हूं, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने नोटिस दिया इनको और इनसे पूछा कि क्या ये एफआईआर जो आपने की, इससे पंजाब में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पंजाब में इससे कोई दंगे हो सकते थे, पंजाब में इसमें क्या हो सकता था, आपने पंजाब में एफआईआर क्यों की, पंजाब में एफआईआर करने का क्या कारण है। तो पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने एसआईटी बना दी है, हमने 2 मामले और तजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज हैं, जो डीडीआर काटी है। वो डीडीआर पता है कहां क्या शिकायत है, वो मलेरकोटला के अंदर है, जहां मैं आज तक जीवन में नहीं गया। वहां पे एक मुस्लिम असलम नाम का जा रहा था, असलम को 10-12 हिंदुओं ने घेरा, उनके हाथ में पोस्टर था, जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, उसके नीचे तजिंदर बग्गा लिखा था। असलम जो शांति प्रिय है, कानून को मानने वाला है, वो पुलिस के पास गया, पुलिस वहां पे तुरंत पहुंची, वहां पे सारे लोग भाग गए थे, लेकिन वो पोस्टर नीचे गिरे हुए थे, उन पोस्टरों को पुलिस ने बरामद करके मेरे खिलाफ डीडीआर काट दिए। मतलब मैंने वहां प्रोटेस्ट कराया और जब पुलिस आने वाली थी मैंने वहां पोस्टर गिरवा दिए ताकि पुलिस को सबूत मिल जाए, और जिस इलाके में मैं आज तक गया ही नहीं हूं। दूसरी शिकायत सेम पोस्टर की लगाई बात है 200 किलोमीटर दूर, कौन सा पुलिस स्टेशन है मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना, मुझे नाम भी नहीं ध्यान आ रहा, मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली किस पुलिस स्टेशन में की है। वहां पे पुलिस की जिप्सी जा रही थी, बस स्टॉप के ऊपर मेरे नाम और मेरे फोटो के साथ पोस्टर लगे थे जिसपे लिखा था जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, और उसको पुलिस ने पोस्टरों को उतार लिया है और मेरे खिलाफ कंप्लेन लिख दी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप सोचिए किस तरीके से ये कोई भी कहानी सुनेगा ऐसा लगेगा कोई फिल्मी कहानी चल रही है, और लोग आते हैं पोस्टर लगा देते हैं, ना पोस्टर लगाने वाले का पता है ना प्रेस का पता है, कोई आके चुपके से लगा गया, पंजाब पुलिस पहुंचती है, ना दिखाने वाला मिलता है ना लगाने वाला मिलता है, लेकिन मेरा नाम मिल जाता है। अभी आपको राहत मिली है तब तक जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है बग्गा साहब, यानी कि 10 तारीख को सुनवाई होगी, कल आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, अपना स्टेटमेंट देना है, बयान दर्ज करवाना है। क्या मजिस्ट्रेट के सामने आपकी ओर से बातें कही जानी है, और जिस दिन आप मामले की सुनवाई होनी है 10 तारीख को, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी तो राहत मिल गई है, इंतजार सबको है कि आगे क्या होगा। देखिए मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जिस तरीके से कल पंजाब हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पे दोबारा तमाचा मारा है, पिछले 2 दिन के अंदर बार बार अरविंद केजरीवाल मुंह की खा रहे हैं, बार बार तमाचे खा रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर से 10 तारीख को एक अच्छा फैसला आएगा। मुझे भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है, ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से चलेगा, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं आज अरविंद केजरीवाल को चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ। तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, एक ट्वीट आपका इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि 50 पुलिस वाले आपके घर पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारी होने लगती है, उसके बाद से 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने हो जाती है। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ किसकी निशानदेही पर हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? ये तो सब जानते हैं पंजाब का सुपर सीएम कौन है, मुझे लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेरे खिलाफ एफआईआर हो, नवीन कुमार के खिलाफ एफआईआर हो, अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर हो, डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर हो, प्रीति गांधी के खिलाफ एफआईआर हो। ये तो पूरे देश को पता लग गया है कि पंजाब का सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल है। ये तो है सिर्फ एक मुखौटा है, और आज भगवंत मान के हाथ में कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठक बैठक करो तो भगवंत मान उठक बैठक करते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया दिन में रात है तो वो रात कहते हैं, तो भगवंत मान तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से डिक्टेट करते हैं उनको करना पड़ता है। यानी कि भगवंत मान कठपुतली है, आप ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की? बग्गा जी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, आवाज पहुंच रही है सर आप तक हमारी?
चलिए वापस हम बात करने की कोशिश करेंगे। तेजेंद्र बग्गा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बता रहे हैं कि किस तरह से जब सुबह उनके घर पुलिस पहुंची परसों सुबह, किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया गया, और ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि बग्गा साहब शायद फिर से हमारे साथ जुड़े। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? कल आप लोगों से जब बात हुई थी तो आप और तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं केजरीवाल, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि पुलिस का मिसयूज करने का आरोप जो लगा रहे हैं उनसे पूछिए वो किस तरह से संस्थाओं का और पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं। बल्कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, उसको लेकर भी लगातार केजरीवाल तरह तरह के बयान देते रहे हैं। देखिए, ये अब तो अब सवाल रह ही नहीं गया, ये तो अब सोल्व हो चुका है, सवाल का जवाब सोल्व हो चुका है। ये तो सारे देश ने देख लिया कि किस प्रकार से अगर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ पुलिस भेज दी जाएगी। मैं अकेला व्यक्ति थोड़ी हूं, मेरे खिलाफ भेजी, नवीन कुमार के खिलाफ भेजी, प्रीति गांधी के खिलाफ भेजी, डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ भेजी, अलका लांबा के खिलाफ भेजी। तो ये तो अब ये अब सवाल नहीं है, ये अब जवाब सॉल्व हो चुका है, सवाल का जवाब। तो अरविंद केजरीवाल डरते हैं, उनसे जो सवाल पूछता है मिसयूज ऑफ पुलिस करते हैं, और इसीलिए वो दिल्ली पुलिस इतने टाइम से मांग रहे थे। और शायद उनके पास अगर दिल्ली पुलिस होती तो शायद वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वारंट जारी करते। बग्गा जी, अभी आपने कुछ Now viewers, let's quick check of the top stories. Open defiance from Rana's. Navneet says she will continue the struggle, won't back down yet. Navneet Rana challenges the Maharashtra Chief Minister to contest against her. Navneet Rana says she was ill-treated and faced mental torture while in prison. Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied on the gates of the Legislative Assembly. Political fight over Khalistan provocation. Kumar Vishwas hints Aam Aadmi Party role in Khalistan provocation. Service halted at the Gyanvapi mosque and massive protests. Big political fight erupts over the survey. Viewers, now we're getting you some breaking updates from Madhya Pradesh, where the Madhya Pradesh police has confirmed that one of the main accused and two other accused were arrested, and the police has said that both were involved in inciting the violence and the riots as well that had broken out in Khargone. Now, the Khargone in fact had witnessed stone pelting, arson and firing on April the 10th. Now, Iqbal Bali, one of the accused in the communal clashes, he is in fact one of the accused. Let's listen in to what really the police is investigating into after one of the accused has been arrested. अभी दो आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। एक इकबाल वाली नाम का आरोपी है और अफजल डिज़ायर नाम का आरोपी है, जो कि अफजल डिज़ायर जो है इंदौर में भागा हुआ था और इकबाल वाली जावरा क्षेत्र में भागा हुआ था। हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें इकबाल वाली के पूर्व में 2 आपराधिक प्रकरण हैं। इकबाल वाली का आनंद नगर क्षेत्र में दंगा भड़काना और लोगों को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसी प्रकार से मियामान मोहल्ला और काजीपुरा में अफजल डिज़ायर ने भूमिका निभाई है दंगा भड़काना। And we have seen, viewers, how the violence had broken out in Khargone and the kind of rioting that had broken out. And Satya Vijay, in fact, joins me live from Bhopal with more details. Satya Vijay, now several arrests are also being made. One of the prime accused, in fact, have also been arrested by the police. जो पुलिस जानकारी दे रही है कि इन्वेस्टिगेशन भी और हो रही है, और क्या हमें जानकारी आप दे सकते हैं?
जी देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार जिस तरह से कहते आ रहे थे कि खरगोन में रामनवमी के दिन जो दंगा हुआ है उसके पीछे एक समुदाय विशेष के लोग हैं, और आज आईपीएस अंकित जायसवाल ने खुद खुलासा किया है कि जो दंगा भड़काने वाले लोग थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनमें से एक अफजल था। पुलिस ने 3 लोगों को अभी हाल में अरेस्ट किया है, जिसमें से अफजल को इंदौर से गिरफ्तार किया है। वो खरगोन से करीब 3 घंटे दूरी के रास्ते पर इंदौर पड़ता है, वहां पर छुपा हुआ था। और अफजल के ऊपर यह आरोप है कि उसने भीड़ को मोटिवेट किया, भीड़ को भड़काया कि वो किस तरह से जगह जगह पर जाकर दंगा करे, और इस बात को खुद आईपीएस अंकित जायसवाल कबूल रहे। इसके अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि दंगा 10 तारीख को हुआ था, आज करीब 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। पूरे मामले में अब तक 72 एफआईआर हो चुकी हैं, 182 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की खबर पर पूरी तरह से पुलिस भी मोहर लगा रही है कि इस दंगा जो था वो प्री प्लान था और इसे भड़काने में एक समुदाय विशेष के लोग थे। अफजल उसमें से मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने कि कई उस समुदाय विशेष के लोगों को भड़काया कि वो गलियों में जाएं, वो आनंद नगर जाएं, वो संजय नगर जाएं, जहां पर की आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हुई हैं। हमने कई ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाए थे जिसमें घर की छतों से पथराव किया जा रहा था। तो ये वही भीड़ है जिनको भड़काने का काम अफजल जैसे मुख्य आरोपियों ने किया था। इसीलिए पुलिस ने अफजल को और उसके अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ कई और ऐसे लोग हैं जो कि अभी फरार हैं, जिन पर की 10,000 के इनाम घोषित हैं, जिनमें एक सबसे मुख्य आरोपी इमरान भी है, जो कि तलवारबाजी करते हुए उसका फुटेज सामने आया था। तो उसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए एक विशेष टीम बना दी गई है। लेकिन पुलिस का बड़ा इनपुट या कहें कि पुलिस की बड़ी सफलता आज पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें कि दंगा भड़काने के मुख्य आरोपियों में से एक अफजल, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। Ji, Satya Vijay there, breaking down the details of the latest arrest that has been made by the police officials. Viewers, now investigation also being carried out into what's really happened in Khargone. सुरक्षा करें। और जो कल का वाकया हुआ है, ये कोई एक इकलौता वाकया नहीं है। आप पिछले 10 दिन के अखबार उठा के देखिए तो समझ में आ जाता है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। अभी 6 मई को ही नरेला इलाके में एक 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 27 अप्रैल को वसंत कुंज इलाके में एक 45 साल की महिला का मर्डर हो जाता है। 24 अप्रैल को नरेला के इलाके में एक मजदूर की जली हुई बॉडी मिलती है। 22 अप्रैल को एक महिला को अपने बच्चों के सामने चाकू लगा के मार दिया जाता है। 15 अप्रैल को एक महिला जो अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ रही थी, उसका बलात्कार हो जाता है। 14 अप्रैल को एक 55 साल के आदमी की कमला मार्केट में खुलेआम चाकू मारकर हत्या हो जाती है। ये पिछले सिर्फ 15 दिन के न्यूज़पेपर से मैं दिल्ली की क्राइम की घटनाएं पढ़ के सुना रही हूं। अगर आप डेटा देखने जाइएगा तो ये पता चलेगा कि पूरे देश में जो सारी मेट्रो सिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा क्राइम के केसेस दिल्ली में रिपोर्ट होते हैं। पूरे भारत में 19 मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन उन 19 मेट्रो सिटीज में से सारे जो रेप केसेस आते हैं उसमें से 40% रेप के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं। 25% मर्डर के केस सिर्फ दिल्ली से आते हैं। यहां तक कि 2021 में 5,500 से ज्यादा हीनस क्राइम्स दिल्ली में रिपोर्ट हुए, किसी भी मेट्रो सिटी से ज्यादा। ये है दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट कार्ड। तो एक तरफ दिल्ली के आम आदमी के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, दिल्ली के आम इंसान के साथ मर्डर होता है, रेप होता है, किडनैपिंग होती है, गोलियां चलती हैं, चक्कू चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की सारी फोर्स सड़क पर उतर जाती है, हरियाणा तक चली जाती है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि आज जो दिल्ली का आम इंसान इस लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशन से परेशान है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है दिल्ली पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, लफंगों को, दंगइयों को जो प्रोटेक्शन देने में बिजी है, जो बचाने में उनको व्यस्त है, उसकी वजह से आज दिल्ली का आम इंसान परेशान है। थैंक यू।
It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. यही वो मस्जिद है जिसके अंदर जो है सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम जब पहुंच चुकी है तो ऐसे में सर्वे जो है शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए इसी ये जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, दरअसल इसी गुंबद के नीचे कहा जाता है कि देखिए वो वापी जो है मौजूद है, वो कुआं जो है मौजूद है जिसमें एक ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, इस गुंबद के पीछे देखिए गौरी श्रृंगार का वो मंदिर है जहाँ पर महिलाएं जो है चाहती है वो याचिका दायर की गई है, जिसमें वो महिलाएं चाहती है कि देखिए हम जो है रोज पूजा अर्चना कर सके, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म जो है खुद चुन सकते हैं। The term of French President Emmanuel Macron was inaugurated for a second time. The inauguration was carried out in a ceremony at the Élysée Presidential Palace in Paris. Macron was re-elected for the term of a period of 5 years in an election runoff that saw him win over far-right candidate Marine Le Pen. Macron was given the necklace of Grand Master of the Legion of Honor, France's highest distinction, before making a speech. 21 cannon shots were fired in a grand manner, marking the event. The troops present at the ceremony belonged to the naval unit of particular significance. The crew was a part of the Monde, France's second biggest military ship, which central element of France's nuclear dissuasion. It was notably used for the tests of France's nuclear-capable submarine-launched M51 missiles. The symbol can be seen as a show of force at times when France is deeply involved in efforts to stop Russia's war against Ukraine. Russia's celebration of the win against the Nazis in the Second World War is being celebrated in Moscow. Known as the Victory Day, the country will celebrate the commemorative festival by carrying out a parade. More than 11,000 troops will take part in events for Victory Day, the biggest patriotic holiday on the Russian calendar, marking the Soviet Union's triumph over Nazi Germany. The preparations for 9 May events take place amid continuing military action in Ukraine. 11,000 servicemen, 131 units of military equipment, and 77 planes are scheduled to take part in the parade. Historical equipment was also Well, viewers, tracking all that's happening with respect to the Khalistan flags that had been hoisted at Himachal, in fact, where now the Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh has spoken to Republic over the Khalistan flags that were raised in Himachal. And remember, Kumar Vishwas had also hinted at the Aam Aadmi Party role in the incident as well. Here's what the Aam Aadmi Party had to say in response. Let's listen it. तरीके से हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे लगे हैं विधानसभा के बाहर, इसको लेकर आपकी पार्टी लगातार आक्रामक है और मनीष सिसोदिया जी ने भी एक ट्वीट किया है। देखिए, कोई ये सामान्य मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, विधानसभा की सुरक्षा का मामला है। किसी भी राज्य की विधानसभा वहाँ का गौरव होती है और सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है।
भारतीय जनता पार्टी के राज में हिमाचल प्रदेश में अगर विधानसभा में खालिस्तान का झंडा फहरा के चले गए खालिस्तानी, तो प्रदेश की जनता को क्या सुरक्षा देंगे लोग? ये हिमाचल की प्रदेश की जनता का अपमान है, ये हिमाचल प्रदेश का अपमान है। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें गुंडों को बचाने में लगी हुई हैं। एक गुंडे को बचाने के लिए कई दिनों से पूरी भाजपा लगी हुई है, सारी लीडरशिप, सारी सरकार। गोवा का सीएम आ रहा है मिलने। तो आप बताइए, हिमाचल प्रदेश और देश की सुरक्षा कब करोगे आप? उसकी चिंता कब करोगे? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल साबित हुई है और इन लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने गहन जांच की मांग की है, कुमार विश्वास जो कि पहले आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक, सर उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, पर उन्होंने उस पर बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से पंजाब में अभी स्थिति हो रही है, खालिस्तान हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, तो ये जो झंडे लगे हैं कहीं ना कहीं उसी का सूचक है। इस तरह का ऐसा है कि बेबुनियाद बातें करने से तो कोई मतलब है नहीं। दिल्ली चुनाव में भी खालिस्तानी कहा गया अरविंद केजरीवाल को, पंजाब में भी कहा गया, दिन रात झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसका तो कुछ अंत है नहीं। सवाल तो ये है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहती है, वहां पर खालिस्तानी झंडा कैसे फहरा के चले गए खालिस्तानी? जो मेरे पे अन्याय हुआ, लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। श्री राम का नाम लेने में और हनुमान भगवान का नाम लेने में अगर कोई 14 दिन डालते हैं तो मेरी 14 दिन में कोई आवाज नहीं दबा सकता। अगर उन्होंने 14 साल भी डाला तो भी मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूँगा। I'm now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Navneet Rana says she was ill-treated and faced mental torture while in prison. Surveys halted at the Gyanvapi Mosque amid massive protest. Big political fight erupts over the survey. Details on the other side, viewers. Don't go anywhere. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. If a 300-year-old mosque had been destroyed, then Abbas and Waris Pathan, Monojit would have been saying Islam is under danger. But if a 300-year-old temple is destroyed, they'll put finger on their lips. Show some equality, show some decency when you come for a debate. Rahul Rajput will be killed because he fell in love with a Muslim girl, and Ankit Saxena would be murdered, butchered, and perhaps lynched by a mob because he fell in love with a Muslim woman. Violence is everything that's on your mind, and you're whitewashing a survivor's experience by not listening to their perspective. That is the problem. That is the problem with bigots in this country, that they want to gag real stories out there. They want to gag stories of the likes of Harsha. They want to gag the stories of the likes of what happened in Hyderabad. You know, you look like an intolerant right now because you don't want to listen to the story of survivors. यही वो मस्जिद है जिसके अंदर जो है सर्वे की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम जब पहुंच चुकी है तो ऐसे में सर्वे जो है शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, ये जो गुंबद आप देख पा रहे हैं, दरअसल इसी गुंबद के नीचे कहा जाता है कि देखिए वो वापी जो है मौजूद है, वो कुआं जो है मौजूद है जिसमें एक ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, इस गुंबद के पीछे देखिए गौरी श्रृंगार का वो मंदिर है जहाँ पर महिलाएं जो है चाहती है, वो याचिका दायर की गई है जिसमें वो महिलाएं चाहती है कि देखिए हम जो है रोज पूजा अर्चना कर सके, क्योंकि हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म जो है खुद चुन सकते हैं। The term of French President Emmanuel Macron was inaugurated for a second time.
The inauguration was carried out in a ceremony at the Élysée Presidential Palace in Paris. Macron was re-elected for the term of a period of 5 years in an election runoff that saw him win over far-right candidate Marine Le Pen. Macron was given the necklace of Grand Master of the Legion of Honor, France's highest distinction, before making a speech. 21 cannon shots were fired in a grand manner, marking the event. The troops present at the ceremony belonged to the naval unit of particular significance. The crew was a part of the Monde, France's second biggest military ship, which central element of France's nuclear dissuasion. It was notably used for the tests of France's nuclear-capable submarine-launched M51 missiles. The symbol can be seen as a show of force at times when France is deeply involved in efforts to stop Russia's war against Ukraine. Russia's celebration of the win against the Nazis in the Second World War is being celebrated in Moscow. Known as the Victory Day, the country will celebrate the commemorative festival by carrying out a parade. More than 11,000 troops will take part in events for Victory Day, the biggest patriotic holiday on the Russian calendar, marking the Soviet Union's triumph over Nazi Germany. The preparations for Up next, viewers, we have an EBIC special alert. A fire gutted the bitumen drums at the Mahmudpura village in Bishna area of Jammu. Now you can see the repercussions of that fire that had broken out and the black clouds that are bellowing out as well. We are learning that the fire emergency services, in fact, can be seen on the ground trying to douse the fire as well. There were several trucks of fire tenders that had been mobilized to this particular spot where the fire had broken out from. And the fire tenders were trying to get the fire under control as well. This is a fire that had gutted the bitumen drums at the Mahmudpur village in the Bishna area of Jammu. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Navneet Rana challenges the Maharashtra Chief Minister to contest against her. And Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied on the gates of the Legislative Assembly. Details on the other side, viewers. Don't go anywhere. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs, because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को एक बड़ी राहत मिली है। 10 मई तक कोई भी अरेस्ट नहीं होगी, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं, क्योंकि आधी रात को ये पिटीशन फाइल की गई और आधी रात को ये हेयरिंग हुई। हेयरिंग में तेजिंदर पाल बग्गा के डिफेंस लॉयर भी मौजूद थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद थे और एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे। एक बड़ी बहस के बाद ये बात पर फैसला लिया गया। पंजाब एंड हरियाणा
हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की तरफ से कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगली डेट जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर है वो 10 मई है। लेकिन तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी पिटीशन में ये मेंशन किया था जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट किए गए हैं जारी, वो एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की लिए किए गए हैं। और इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने ये ऑर्डर और डायरेक्शंस रिलीज की हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि 10 मई तक कोई भी गिरफ्तारी तेजिंदर पाल बग्गा की नहीं होगी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मेंबर हूं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो सही बात है। क्यों, मैं बताता हूं क्यों। देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी है। देश में हजारों कल्चर्स हैं, हजारों ज़बानें हैं, हजारों आपके 100 रिलीजन्स हैं। ये देश की खूबसूरती है। आप एक कोर्ट को कैसे लाएंगे? भाई मेरे को असदुद्दीन ओवैसी को राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत, वो एब्सोल्यूट राइट है। आप कैसे उसको इंपोज करेंगे मेरे आर्टिकल 29 के ऊपर? आप होते हैं कौन है? नहीं, सेंसस तो होगा, सेंसस तो होगा। सेंसस को सपोर्ट करता हूं, एनआरसी एनपीआर को सपोर्ट नहीं करता हूं मैं। और सेंसस अलग है, एनपीआर एनआरसी अलग है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये इंसिडेंट हुआ, आपने कल कंडेम किया, लेकिन हाँ मैडम देखिए, उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए, उनको उनके सामने खड़ी रहेंगे और उनको जवाब देंगे। Top headlines at 3 p.m. Open defiance by the Ranas. Navneet says she will continue the struggle, won't back down yet. Navneet Rana challenges the Maharashtra Chief Minister to contest against her. Navneet Rana says she was ill-treated and faced mental torture while in prison. Khalistan provocation in Himachal Pradesh. Khalistan flags tied on the gates of the Legislative Assembly. Political fight over Khalistan provocation. Kumar Vishwas hints up role in Khalistan provocation. Surveys halted at the Gyanvapi mosque amid massive protest. Big political fight erupts over the survey. And viewers are getting in the first response from the former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis after Navneet Rana was released just a short while back from the Lilavati hospital. In fact, taking on the Maharashtra government, Fadnavis said that Navneet was ill-treated in the hospital and going on to add that that's in fact the first response coming in from Devendra Fadnavis. Let's listen into that soundbite. आता स्टेबल होते आहे, परंतु एकूणच ज्या प्रकारे त्यांना वागणूक देण्यात आली ती मात्र अतिशय गंभीर आहे. म्हणजे जे क्रिमिनल्स असतात त्यांनाही जी वागणूक दिली जात नाही तशा प्रकारची वागणूक त्यांना देण्यात आली आहे. या सरकारने क्रौर्याचे सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत असं माझं मत. और नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13 ये सरकार ने दी है. अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ. अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं. हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ. जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की, हाँ, पुलिस
जनता ने वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी हिंदी में और महाराष्ट्र के ऊपर जो एक महिला की तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, तो शी शुड गेट चेक। 27 से लेकर 4 तारीख मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया है। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज लेना। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ठाकरे जी को भी बोलना चाहूँगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी दूंगी, आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपकी मैडम मराठी बोला मैडम ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या लॉकअप में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर हमारा पूरा विश्वास था। और 10 तारीख को जो अयोध्या के पोस्टर लगे हैं उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम असली है कि नकली है। बाला साहब असली थे, जो 10 तारीख को जा रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व को गांड रखा है, हिंदुत्व को भूल गए हैं। वो नकली लोग अयोध्या जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम असली है। तो जब पोस्टर लगाने की बारी इन पे आ रही है तो समझ जाओ आने वाले परेड में हिंदू उनको जगह दिखाने वाले। जिस तरह से कार्रवाई हुई तो क्या कहेंगे? आज 5 तारीख को फैसला जेल से आई थी और यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से कार्रवाई हुई इस पर क्या कहेंगे? कौन सी कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने जो कार्रवाई दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक महिला को शिवसेना डर चुकी है, राज्य सरकार डर चुकी है, उद्धव ठाकरे डर चुके हैं। और एक महिला पे इतना अत्याचार महाराष्ट्र में अगर होता है मुख्यमंत्री के माध्यम से, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। और आने वाले समय में हनुमान भक्त और राम भक्त उनको जगह बताएंगे। और उन्होंने खुली चेतावनी दी है खासदार नवनीत राणा ने कि उद्धव ठाकरे ने जनता के बीच आगे खड़ा रहना चाहिए।
उनको उनके सामने खड़ी रहेंगी और उनको जवाब देंगी। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या दिल्ली में जा रहे हैं आप? दिल्ली जाने वाला हूँ और दिल्ली को न्याय मांगने वाला हूँ। वहाँ गृह मंत्रालय है, पीएम साहब है, जो डिपार्टमेंट में शिवसेना के माध्यम से जो इंक्वायरी शुरू है वो जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए। और अनिल परब आणि संजय राऊत या दोघंही जेलाच्या आतमध्ये गेले। बीएमसी नोटिस ये एक दुश्मनी निकाल रहे उद्धव जी, और उद्धव ठाकरे सीएम होते हुए अगर पद का दुरुपयोग करते हैं, मुझे लगता है जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई उसको मान्यता मुंबई महानगर पालिका ने दी है, उद्धव ठाकरे जी के महापौर ने दी है। अगर कुछ गलत है तो उन्होंने आके चेक करना चाहिए। पूरी बिल्डिंग उनके नज़र के सामने है और मुझे लगता है ये द्वेष और खुन्नस की राजनीति है, ये महाराष्ट्र और देश की जनता जान रही है। नवनीत काफी परेशान है, काफी परेशान है। नेक्स्ट मूव क्या होगा? अगर आप हम लड़ेंगे, हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय ने पहले ही कहा है राजद्रोह का गुना गलत है, गलत तरीके से इन पे ऑफेंस दाखिल किया है, 14 दिन जेल में रखा गया है और न्यायालय पे हम लड़ेंगे। न्यायालय के माध्यम से जिन्होंने गलत हमारे ऑफेंस दाखिल किया उन पे कार्रवाई करेंगे। Moving on then, refugees of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir held a mega rally in Jammu in which thousands of refugees participated in the rally. They said that they want their land back and that they want to meet their relatives in the other end of the border. Sea of POJK refugees have gathered here in Jammu as a part of Smaran Divas to remember those who have attained martyrdom in the Pakistan's brutality when the part of Jammu and Kashmir was illegally occupied by Pakistan, and now these people have come from various parts of the country to remember those who have given the supreme sacrifice. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पर छूट गए विस्थापित लोग, हमारे जो वहाँ पर पूर्वज छूट गए हैं, उन लोगों को हम अपने साथ मिलाना चाहते हैं और हम उनके साथ मिलेंगे। पीओजेके का जो हिस्सा उसको लेने के लिए आज संकल्प लेंगे और अपने जो पूर्वज थे उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि दे रहे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार मांग उठ रही है पीओजेके वापसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है, ये ऐसा होना चाहिए। हम उधर जाएँ, वो इधर आएँ, एक दूसरे का मिलाप होना चाहिए। वापस आना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल वापस आना चाहिए, पूरा का पूरा वापस आना चाहिए। And a quick roundup of all that's making news. Khalistan flags found tied to the main gate and boundary wall of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in Dharamshala. Himachal police launched a probe. The Khalistani provocation triggers a political war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party. Both parties blame each other for promoting Khalistan elements and disturb the harmony. Following the incident of Khalistani flags in Himachal Pradesh, Kumar Vishwas recalls his warning during Punjab polls, says the country should remember the warning given by him. Surveys halted at the Gyanvapi mosque amid massive protests. BJP's big political fight erupts over the survey. The court will now hear the matter on 9th of May. Open defiance by the Ranas as Navneet Rana gets discharged from the hospital, says she will continue the struggle, won't back down yet. Minority Commission takes note of Bagga not being allowed to wear a turban during his arrest. Tajinder Pal Bagga hails the move and exudes faith in minority body. Following the central government's Jimpur College notice to use Hindi language in registers and files, DMK MP Kanimoi alleges central government trying to impose Hindi in southern states. Madhya Pradesh police arrested one of the main accused who incited the communal violence in Khargon on the occasion of Ram Navami on 10th of April. Attack on steel company employees in Palghar alleged by members of a labour union, 19 policemen injured and 12 of their vehicles damaged as they tried to control the mob. Massive encounter between the security forces and terrorists in the Devar area of Jammu and Kashmir's Kulgam. 2 terrorists neutralized. The world over, you will not be able to cite one example of a Hindu organization being banned
for spreading terrorism in the name of Sri Ram or any other Hindu god, nor will you be able to cite a single judgment which actually convicts a Hindu person for, suicide bombing after sloganeering Jai Sri Ram or Jai Siya Ram. You are whitewashing lived experiences of thousands of Hindus out there. When I speak of Hindu phobia, I speak of it from my own experience. I am a survivor of this experience, and you're not letting me talk. You're not letting me tell my story. And this is Hindu phobia. When call for genocide of Muslims are being given, Modi is silent. When call is given by the guru like Bajrang Muni that we will kidnap Muslim women and rape them, Modi is silent. Kali Charan humiliates the Muslim, Modi is silent. Unless and Modi stops them, this will not stop. But Modi does not want to stop them. When Nagaraju was killed for being a Hindu, all his party's top leaders are in Hyderabad. Which one of them, Ratan Sharda, please ask him, which one of them had a protest march? That is Hindu phobia. And slipping into a very short break for now. Don't go anywhere. Lots lined up for you on the other side. The Khalistan provocation gets bigger. Political fight over the Khalistan provocation. All the latest on that on the other side. And surveys halted at the Gyanvapi mosque amid massive protests. Big political fight erupts over the survey.